का नंबर पड़ जाए पूरे दिन बैठे बजेगा सबने बता की घंटी ने बस आप तो नहीं है यार तो घंटी की बैटरी समझ अभी ओके good morning to all. We welcome you for the orientation program. We'll be starting the program shortly. And I can see Professor Sandeep Verma has also joined. So we welcome Professor Sandeep Verma. We'll be just beginning with the program. Thank you so much. We welcome you for the orientation program. We'll be starting the program shortly. And I can see Professor Sandeep Verma has also joined. So we welcome Professor Sandeep Verma. We'll be just beginning with the program. Thank you so much.
वर्षा जी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Congratulations to Harsha तो for आप good morning, sir. Sir, join. जी. congratulations to Harsha for Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You start. Starting the program. Sir, can we start the program, sir? yes, of course, please. Yes. Honorable Vice Chancellor, Professor Vinay Kumar Pathak ji, Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Sudhir Kumar Awasthi ji, our guest of honor, Professor Alok Dhawan ji, and Chief Guest, Professor Sandeep Verma ji, Dean Research and Development, Professor Varsha Gupta ji, and all other esteemed guests, faculty members, and dear students. Good morning. I am Dr. Sriharsha Rajpudi, Assistant Professor, Department of Life Sciences. I welcome you all for today's PhD orientation program on behalf of the R&D Cell CSJM University, Kanpur. In the eminent leadership and directions of Honorable VC Sir, we have successfully completed this year's PhD admission process, and we are about to start the coursework soon. In the outset, this one-day orientation program has been designed to give a brief overview of the PhD program and motivate the young researchers toward best research practices, and also aim to inculcate scientific temperament in the young minds. Here gathered with us, the course conveners of all the subjects, R&D coordinators, and faculty members of the CSJM University and wider affiliated colleges. Before going into the main program, let's begin with the Saraswati Vandana. Well, the beautiful hands of Saraswati Ma has changed the aura of this meeting. I hope we all can sense the positive vibes. Now I request Dean Research and Development, CSJM University, Professor Varsha Gupta ji, to deliver her introductory remarks. Thank you, Harsha. Good morning. It's a privilege to welcome our honorable guests, Professor Sandeep Verma ji from IIT Kanpur and the present Secretary, Science and Engineering Research Board, DST, Government of India. Thank you so much, sir, for consenting to address our new PhD scholars. We welcome Professor Alok Dhawan, Director, Center for Biomedical Research, Lucknow. Thank you for considering to guide the scholar. We welcome you, sir, for the program. We welcome Professor Sudhir Pratap Singh, Dean Students Welfare, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We welcome Professor Meenakshi Thapan, University of Delhi, New Delhi. Dr. Neeraj Kumar from Punjab University, Chandigarh. We thank all our guests for giving time for the orientation program. The driving force behind the PhD entrance and batch initiation and for all the motivation and inspiration. We welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Vinay Kumar Pathak, sir. Due to his vision and willpower to move forward against all odds, we are able to organize this program for PhD.
As before he joined as the Vice Chancellor of CSJMU Kanpur, PhD was conducted only once in last 10 years, but under his able guidance, we are able to conduct 2 PhD entrances back to back in 2021 and 2022. Thank you so much, sir, for all the motivation and support. We welcome our Honorable Pro Vice Chancellor, Sir, Professor Sudhir Kumar Awasthi, sir, whose constant encouragement and support helped us plan all the activities. We welcome all the deans, directors, subject conveners, faculty members, all the team R&D members, staff, and we welcome our dear students because we are hosting this program for them. We hope you will learn some key points to remember while initiating your, and we welcome all the media personals. Before this program is initiated, with the permission of the chair, I would like to present brief report of the activities conducted by Research and Development Cell of the University. Sir, we would like to present a brief report. So, under able guidance of Honorable Vice Chancellor, sir, Research and Development Cell हमारा last year May 2021 में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पहली बार शुरू किया गया। सर के आने के बाद महाविद्यालयों में कार्यरत जितने भी नियमित शिक्षक थे, जो यूजी और पीजी के दोनों ही शिक्षकों के लिए पीएचडी सुपरवाइजरशिप सर के गाइडेंस में ओपन की गई। इसके बाद हम लोगों ने स्ववित्त पोषित योजना सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के शिक्षक जो हमारे कैंपस में थे, जो लॉन्ग टर्म पे थे, को भी रिसर्च सुपरवाइजर बनाने के लिए सर ने पहल की और उनको भी सुपरवाइजर बनाया। सर के ज्वाइन करने से पहले हमारे कैंपस में सिर्फ 10 पीएचडी सुपरवाइजर्स थे और आज की तारीख में हमारे पास लगभग 130 पीएचडी सुपरवाइजर्स हैं। और सर के ज्वाइन करने के समय हम लगभग 27 विषयों में पीएचडी करवा रहे थे और अब हम लगभग 50 विषयों में पीएचडी करवा रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे नए विषय जैसे कि लॉ, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जर्नलिज्म आदि में पीएचडी पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेस में भी हम पहली बार पीएचडी करवा रहे हैं सर के गाइडेंस के अंडर में। पीएचडी का काम अब सारा का सारा हमारे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मदद से किया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए पूरा ऑनलाइन पोर्टल हमारा सेट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें उनको लॉगिन आईडी के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। सारे सुपरवाइजर्स के लिए भी लॉगिन आईडी का काम अभी प्रोसेस में है, जो जल्दी ही उनके लिए भी शुरू हो जाएगा। पिछले बार जब प्री पीएचडी की क्लासेस कंडक्ट हुई थी तो क्लासेस को ज्ञान संचय, जो हमारी यूनिवर्सिटी का एक एजुकेशनल पोर्टल है जिसमें सारे लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड रहते हैं, उसमें किया गया था। बट इस बार सर के प्रयासों से 100% क्लासेस हमारी रिकॉर्ड होंगी और ज्ञान संचय पे हम इसको अपलोड कर सकेंगे जिससे कि बच्चे इनको एक्सेस कर सकें। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि 2021 में कुछ 2019 के छात्रों के लिए हम लोगों ने प्री पीएचडी की कक्षाएं कैंपस में की थी और साथ ही साथ 2021 के बच्चों की भी प्री पीएचडी कक्षाएं करके उनके एग्जाम्स लेते हुए उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। उनकी सुपरवाइजर्स अलॉटमेंट की प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो रही है, वो भी प्रयास में ही है। कुलपति जी के निर्देशन में रिसर्च के सारे कार्य जैसे कि पीएचडी वाईवाओसी, आरडीसीज और सारी मीटिंग्स ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने प्रारंभ की हैं। और ये भी एक खुशी की बात है कि इस कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी हमने लगभग 100 से अधिक पीएचडी स्टूडेंट्स का वाइवा करवाया है और बहुत सारा बैकलॉग सर के पहले जो 2017-18 से हमारी यूनिवर्सिटी में ड्यू था, उस सारे को हम लोगों ने क्लियर करवाते हुए सारा चीजें अब बैक टू ट्रैक आ गई हैं। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर के एक और प्रयास था कि हम शोध की एक्टिविटीज बहुत बढ़ाएं और बच्चों का भी शोध मॉनिटरिंग करें। इसके लिए स्पेशल आरडीसी बैठकों का आयोजन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल ने किया है, जिसमें बच्चों को जो भी प्रोग्रेस उनकी है उसको मॉनिटर करते हुए और उनको एक सही दिशा प्रदान की जा सके, जिससे कि छात्र और आगे अपना एकेडमिक एक्टिविटीज में और रिसर्च एक्टिविटीज में एक्सीलेंस अचीव कर सकें। साहित्यिक चोरी और प्लेगरिज्म के चेक के लिए हम लोगों ने सर के अंडर में टर्निटिन सॉफ्टवेयर का काम भी किया है और चेक फॉर फ्लैग, जिसमें विभिन्न भारतीय 22 भाषाओं में फ्लैग चेक किया जा सकता है, उसकी भी खरीद संपन्न हो चुकी है। हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी में ये सॉफ्टवेयर्स हैं और सर के उसमें हम लोगों ने स्कोपस सॉफ्टवेयर की भी खरीद शुरू की है, जिससे कि हम डेटा को लिंक कर सकें और रिसर्च एक्टिविटीज को और अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकें। विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में
रिसर्च की एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक सीवी रमन माइनर रिसर्च स्कीम भी लॉन्च की है 2020 में। इसमें विश्वविद्यालय अपने स्वयं के फंड से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता 1 साल में प्रदान कर रहा है। और हमने लगभग 43 परियोजनाओं को, जिसमें यूनिवर्सिटी के टीचर्स के अलावा कॉलेज के टीचर्स भी हैं, उनको हम लोगों ने ये अनुदान दिया है और इस अनुदान के साथ उनका काम भी शुरू हो गया है। सर के प्रयासों से हम लोगों को यहाँ पर लगभग 25 से अधिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से हमारे सभी फैकल्टीज में कई फैकल्टी मेंबर्स को प्राप्त हुई हैं। उसके लिए भी सर का प्रयास और फैकल्टी का मोटिवेशन सर की तरफ से बहुत ही ज्यादा पुश किया गया कि एवरी फैकल्टी हैज टू सबमिट अ रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस और R&D। मुझे ये भी बताते हुए बहुत हर्ष अनुभव हो रहा है कि विश्वविद्यालय अपने फंड से छात्र हित में 3 फेलोशिप योजनाएं लॉन्च कर चुका है, जिसमें राधा कृष्णन फेलोशिप स्कीम है, जिसमें जो विभिन्न स्ट्रीम के टॉपर्स हैं उनको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जिसमें 10,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति ऐसे छात्र को दी जाएगी जो सोशियोलॉजी सोशल वर्क में छत्रपति शाहू जी महाराज के ऊपर रिसर्च करता है। उसके अलावा रामानुजन टीचिंग असिस्टेंटशिप, जितने भी बच्चे हमारे नेट क्वालिफाइड हैं उनको 10,000 रुपए प्रति माह की दर से विश्वविद्यालय अपने फंड से उनको स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। और ये भी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है, ये लोगों का जल्दी ही FC में जाएगा ये वाला प्रपोजल। सभी PhD के छात्रों के लिए उनको 2 बार वो ये फंड क्लेम कर सकते हैं यदि उन्हें नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन करना है और अपना एब्स्ट्रैक्ट या अपना पोस्टर या इन्वाइटेड टॉक ओरल प्रेजेंटेशन करना है। उसके लिए वित्तीय सहायता 25,000 रुपए की, ये 25,000 रुपए वो एक बार में भी ले सकता है या 2 बार में ले सकता है। 25,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट। ये बच्चों के लिए सुविधा VC सर के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसको विश्वविद्यालय ने इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका प्रपोजल तैयार हो चुका है। पॉकेट लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी की सुविधा कुलपति जी के प्रयास से सारे छात्रों के लिए, बिल्कुल ये पिछले साल भी की गई थी और इस साल भी सारे छात्रों के लिए जल्दी ही मोबाइल लाइब्रेरी उनके ऊपर उनके मोबाइल फोन्स पर अवेलेबल होगी हमारी। और सर के उसमें हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट, पेटेंटिंग के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी कोई भी इनोवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज अगर होती हैं तो उसका भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जल्दी ही R&D सेल इसको भी लॉन्च करेगा। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस के हैं उसको भी सर के प्रयासों से बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज का खर्चा छोटे इवेंट में जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं उसमें विश्वविद्यालय अपने फंड से उसको मैनेज करेगा। और जैसा कि अभी डॉक्टर हर्षा ने बताया कि हम लोगों ने PhD की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है और नए छात्रों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो हमारा नया बैच इस वक्त हमारे साथ है और हम अपने नए बैच के सारे बच्चों का स्वागत करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल हमारा ये कमिटमेंट है कि जो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने में, उनकी रिसर्च जर्नी में जो भी भागीदारी हम लोगों की तरफ से सपोर्ट के रूप में है, हम लोग उसको हमेशा ही पूरा करेंगे। और कुलपति जी का और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू हर्षा। I thank Professor Varsha Gupta for giving a detailed overview on the university PhD program. निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के आगे की महान शोध यात्रा के लिए यह एक उल्लेखनीय शुरुआत हो सकती है। Definitely, this can be a remarkable start this year. We are honored to have here Professor Alok Dhawan, Director, Center for Biomedical Research, Lucknow, as our honorary guest to motivate the students and to share his words of wisdom. I take immense pleasure to read brief accomplishments of Professor Dhawan here. Professor Alok Dhawan is a director with a leadership in institution building, both higher education and R&D, with more than 30 years of experience. He is instrumental in setting up an innovation ecosystem with emphasis on translational research and startup culture throughout the country. Professor Dhawan is currently Director, Center of Biomedical Research, Lucknow. Formerly, he served as Director, CSR Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, and also served as Founding Director, Institute of Life Sciences, and Dean Planning and Development, Ahmedabad University, Gujarat. He obtained his PhD degree in biochemistry from University of Lucknow, India in 1991. He has been awarded DSc degree from University of Bradford in 2017. He was a visiting scholar, Michigan State University, USA,
University of Surrey, Wales and Bradford, UK, and visiting scientist, Vibrotoxicology International, Surrey, UK. Rosa Dhawan started the area of nanomaterial toxicology in India and published a guidance document on the safe use of nanomaterials. His group elucidated the mechanism of toxicity of metal oxide nanoparticles in human and bacterial cells. His work has been widely cited. He set up a state-of-the-art nanomaterial toxicology facility at CSIR IITR, as well as the Institute of Life Sciences. He has also made significant contributions in the area of genetic toxicology. Rosa Dhawan has won several honors and awards, including INSA Young Scientist Medal in 1994, CSIR Young Scientist Award in 1999, Shakuntala Amir Chand Prize of ICMR in 2002, and Vigyan Ratna by Council of Science and Technology, UP, in 2011. He has been elected fellow in several science academies and organizations, including the National Academy of Sciences, India, the Academy of Toxicological Sciences, USA, the Academy of Environmental Biology, Indian Nanoscience Society, and Royal Society of Chemistry, to name a few. He has to his credit over 160 publications in peer-reviewed national, international journals, 20 reviews, book chapters, 4 patents, 2 copyrights, and has edited 7 books. He is the editor-in-chief, Journal Translational Toxicology, published by American Scientific Publishers, USA, and serves as the member editorial board of Chemical Research Toxicology, Mutagenesis, Nanotoxicology, Mutation Research Reviews, and other journals of repute. It is really a privilege to read accomplishment of Rosa Dhawan, and may I request Professor Dhawan to kindly deliver his lecture and address the gathering now. Thank you very much. बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया कि मैं जो पीएचडी छात्र छात्राएं उनको संबोधित कर सकूं। साथ ही मैं प्रोफेसर संदीप वर्मा का भी अभिनंदन करता हूं जो आज हमारे समक्ष हैं। बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, साइंस लीडर हैं इस समय पूरे देश में। उन्होंने कई नए प्रोग्राम खासतौर पे छात्र छात्राओं के लिए लॉन्च किए हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करी हैं, खास तौर पे फेलोशिप, जो कि बहुत आवश्यक होता है किसी भी एक पीएचडी स्टूडेंट को आगे जाने के लिए। और मैं ये भी जान के बहुत अच्छा लगा मुझको कि सारी चीज़ें अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो स्टूडेंट्स अपना प्रोग्रेस फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पर उनके कागज़ हैं वो फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका नमन करता हूँ। जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत ही ये पहला कदम होता है किसी भी साइंटिफिक करियर में जाने के लिए, और यहीं से शुरुआत होती है एक नए जीवन की। मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार से आप उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैसे उसको क्रमबद्ध तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं, और अंततः उसमें किस तरह से आप इन्फ्रेंसेस निकालते हैं और अपने पेपर्स छापते हैं या पेटेंट्स लेते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक तरीके से मैं समझता हूँ एक लर्निंग प्रोसेस है। पीएचडी इज अ लर्निंग प्रोसेस which sort of teaches you how to do good quality science in a methodical fashion। और जितना भी आपका कार्य जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाए, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो, चाहे वो आपके लैब रजिस्टर्स के फॉर्म में हो, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए, डेट वाइज करना चाहिए, साइन करना चाहिए आपको भी, आपके सुपरवाइजर को भी। जहाँ तक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, मैं समझता हूँ अमूमन हम लोग ये करते हैं कि अपने गाइड से पूछते हैं कि आप जो बताइए वो हम काम शुरू कर दें। मेरा अपना स्वयं का मानना यह है कि अगर आप लोग खासतौर पे जो एमएससी पास हैं अब तो सब, और पीएचडी के करना जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर मैं बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि गाइड और सुपरवाइजर का अर्थ आप समझ लें तो काफ़ी हद तक आपका काम आसान पड़ जाएगा। और इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक पावर पॉइंट की स्लाइड खोलें, उस पर राइट बटन क्लिक करें तो एक ग्रिड एंड गाइड्स आती हैं, आप उसको डालेंगे तो आपके सामने ग्रिड और गाइड बन के आ जाएगी, लेकिन ये नहीं बताती है ग्रिड और गाइड कि आपको लिखना क्या है। तो स्लाइड में जो लिखना है वो आपका दिमाग है, गाइड केवल आपको ये गाइड कर देगा कि आप सही दिशा में जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अगर आपको बताता रहेगा हमेशा क्या करना है तो आप एक अच्छे वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे।
मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, टाइम देना चाहिए, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने ज्वाइन किया, कल हमें रजिस्टर करा दी, परसों अपनी सिनॉप्सिस जमा कर दें, हम ऑब्जेक्टिव्स तय हो जाए। तो ऐसा जल्दबाजी में, हड़बड़ी में इस तरह से काम पीएचडी में नहीं मजा आता है। दूसरा मैं समझता हूँ कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि पिछली जो नॉलेज गेन करी गई है उसको संरक्षित कर सकता है, उसको कंपाइल कर सकता है और उसके आगे की नॉलेज को वो बढ़ाता है। बाकी जितनी एनिमल स्पीशीज हैं वो नए सिरे से हर बार शुरू करती हैं, चाहे वो आप शेर को माने चाहे जिसको माने, हर बार नए सिरे से शुरू करता है। तो हम लोग का ब्रेन अगर आप देखेंगे तो उसकी संरचना ही एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, अगर वो जानेंगे जूलॉजी बैकग्राउंड से, तो हमारी ब्रेन की संरचना ही क्वेश्चन मार्क है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपके ये 6 इंच है सर, या जो भी 8 इंच जो भी आपका सर है, इसमें जितनी भी आपकी इंद्रियां, चाहे वो सूंघने की शक्ति हो, चाहे देखने की शक्ति हो, चाहे आपके सोचने की शक्ति हो, सब इसी में मिली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो आपकी नोज हो, अगर आप बहुत कायदे से उसकी एनाटॉमी देखेंगे तो एक रिवर्स क्वेश्चन मार्क की तरह है। आंखों को भी अगर आप साइड से देखेंगे आपको क्वेश्चन मार्क की तरह दिखेगी, कान भी क्वेश्चन मार्क की तरह दिखेंगे। मैं समझता हूँ जो आपकी पूरी संरचना है, जो एनाटॉमी है, वो इसी तरह बनाई गई है आपके लिए कि आप हर चीज को अपने चारों तरफ सराउंडिंग में क्वेश्चन करें। और यहीं से शुरुआत होती है एक अच्छे पीएचडी प्रोग्राम की। आप कितने अच्छे प्रश्न पूछते हैं, कितनी गहराई तक आप उसमें जाते हैं, किस प्रकार से आप उसको एनालाइज करते हैं। तो जितनी बाकी सब शरीर आपका फॉलो करता है जो आपका ब्रेन कहता है, लेकिन जो क्वेश्चनिंग द सराउंडिंग्स है या क्वेश्चनिंग द एनवायरनमेंट है, वो बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई से क्वेश्चनिंग द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स इज ऑल्सो मेंट कि आप अपने जो भी आपके गुरु हों उनसे भी आप शास्त्रार्थ करें। मैं नहीं कहता हूं कि आप उनसे कोई ऐसी बात करें जो गलत हो, लेकिन आप उनसे बात करें, उनसे डिस्कशन करें और वैज्ञानिक तौर पर डिस्कशन करें और कोशिश करें कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसकी रैशनैलिटी होनी चाहिए, उसका एक तर्क होना चाहिए, क्यों आप करने जा रहे हैं ऐसा काम, उसके नॉवेल्टी क्या है उस काम की। इन सब चीज़ों को करने में समझता हूँ अगर आप अपना ज़्यादा समय प्लानिंग में लगाएं और एक अच्छी प्रॉब्लम ढूंढने में लगाएं, तब जब आप प्रॉब्लम को आगे लेके चलते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आप वही करते जा रहे हैं जो हमेशा से होता जा रहा है तो आपको शायद एक डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जब आप पीएचडी डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो उसकी क्या अहमियत है, क्या वक़्त है, वो आपको नहीं समझ में आएगी। तो मेरा मानना ये है कि खासतौर पे जो हमारे छात्र छात्राएं आज इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, डिजिटल माध्यम से, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, और जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं उनसे मैंने कहना चाहूँगा कि अवश्य थोड़ा समय अपने आप को दें, अपने गाइड से, अपने कोलीग से और जगहों से भी कोशिश करें कि एक अच्छी प्रॉब्लम ढूंढें जिसको आप अगले 4-5 वर्षों में सॉल्व करेंगे, ताकि एक आप अपना स्थान बना सके, अपना एक मार्क बना सके, अपना एक निश बना सकें कि इस एरिया में हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया। जहाँ तक कोलैबोरेशंस का सवाल है, मुझे बहुत खुशी है कि इस समय सीबीएमआर ने छत्रपति शिवाजी जी महाराज यूनिवर्सिटी के साथ में एक एमओयू साइन कर लिया है, जिसमें खास तौर पे ये इसीलिए रखा गया था कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कुछ काम ऐसा करना हो जो हमारे यहाँ पर होता है तो उसके लिए ये एमओयू बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो मैं आप लोग का आह्वान करूंगा कि जब आप अपनी, और खास तौर पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या उपकरण मौजूद हैं। वो प्रॉब्लम साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है, उस पर डिपेंड करनी चाहिए। और फिर चाहे वो आईआईटी कानपुर हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट हो, चाहे 4 या 5 इंस्टीट्यूट सीएसआर के लखनऊ में है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू में एक बहुत ही हाई एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट सेंटर बना हुआ है। फिर मैं समझता हूँ कि आप लोग को हर जगह जाके देखना चाहिए कि कहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरह अपना काम कर सकते हैं, तो एक हाई एंड साइंस निकल के आएगी। मैं समझता हूँ कि इससे न केवल आपकी जो क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस हैं, जो पेटेंट्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, लेकिन आपका अपना एक एक्सपोजर होगा जो आगे चल के आपको काम आएगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि जब आपके अच्छी क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस होंगे, एक अच्छी पीएचडी डिग्री होगी, तो आपको बाहर आपका रास्ता एकदम से खुल जाएगा, चाहे वो पोस्ट डॉक के लिए हो, चाहे आप आगे चल के किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में एज फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये जो आपका एक तरीके से पीएचडी प्रोग्राम है, ये एक आपके पूरी जिंदगी साइंटिफिक करियर की एक नींव है। जब मैं साइंटिफिक करियर कह रहा हूँ तो चाहे वो जिस भी
विभाग में आप लोग पीएचडी कर रहे हैं वो ये उसकी नींव होगी जिसके ऊपर आपका पूरा साइंटिफिक करियर रेस्ट करेगा। तो जितनी मजबूत आप इस नींव को बनाएंगे उतनी अच्छा आपका करियर आगे चल के चलेगा। और आगे जब आप दूसरे पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे तो आपको भी वैसे ही अवसर प्राप्त होंगे कि आप उनको भी मोटिवेट कर पाएं, अच्छी तरह से गाइड कर पाएं। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अब हैं पीएचडी के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट गेट हो, चाहे गेट लोन हो, जिसमें आपको फेलोशिप या स्कॉलरशिप मिलती हैं। और बीच बीच में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स सैंडविच प्रोग्राम में विदेश जा सकते हैं। हमें बहुत जान के खुशी हुई कि यूनिवर्सिटी ने कुछ फेलोशिप्स ऐसी रखी जहाँ पर आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार भी आपको कुछ फेलोशिप देती है जब अगर आपका पेपर एक्सेप्ट होता है बाहर जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ, और जितना ज़्यादा आप अपने सीनियर से और आसपास की लैबों से सीखेंगे, जितना इंटरडिसिप्लिनरी आपका थॉट प्रोसेस होगा, उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे, उतना बेहतर आपकी थीसिस होगी। एक आप लोग को ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस प्रकार से आप पेपर्स लिखें। तो जितना ज़्यादा आप पेपर्स को पढ़ेंगे उतना आपकी समझ में आएगा किस तरह लिखना चाहिए। लिखना या आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण एक चीज़ है जहाँ तक आपका साइंटिफिक करियर इन्वॉल्व है। तो आप बहुत अच्छी साइंस करते हैं लेकिन आप ठीक से उसको कम्युनिकेट कर नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपका पेपर हो, तो फिर दिक्कत होती है आगे चल के। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो वीक हैं या आपको लगता है कि उनको बेहतर करना चाहिए, तो चाहे आपके यूनिवर्सिटी में भी कम्युनिकेशंस के, मास कम्युनिकेशंस के और अदरवाइज जो कोर्सेज हैं उनमें आप जाके एनरोल करिए या उनसे समझिए। और जो एक इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश है उसमें भी आपको धीरे धीरे दक्षता लानी चाहिए। जहाँ तक अपनी मातृभाषा है उसमें जरूर आप शोध पत्र भी लिखें, उनको छापे भी जहाँ पर आप छाप सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा आपको अगर इंटरनेशनल स्फीयर में आना है तो आपके जो पब्लिकेशंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे करके अपनी लैंग्वेजेस पे भी ध्यान दें। जहाँ तक मैं समझता हूँ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट या हाई एंड साइंस करने की बात है, इस समय इंडिया में जो भी आप करना चाहें, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू ईदर इन biological sciences, chemical sciences, physical sciences, computer sciences, engineering, anything and everything that you wish to do is available in the country. I think that should not hinder your identification of a problem. और मैं समझता हूँ इस समय जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो आने वाले 25 वर्ष होंगे जब हम 100 वर्ष में जाएंगे, तो उसके लिए कोलैबोरेशन बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी हम अच्छी साइंस कर पाएंगे। और ऑलरेडी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिशन मोड प्रोग्राम्स या कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स डेवलप करें। और उन्हीं कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स में मैं चाहूँगा कि जो आपके पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको काम करने का अवसर प्राप्त हो, ताकि वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी जा पाएँ, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी चर्चा कर पाएँ और एक अच्छा प्रोग्राम लेके आगे आ पाएँ। हम समझते हैं कि आप अगर अपना फोकस रखेंगे, डेडिकेशन रखेंगे, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही चीज़ को लेके परेशान हो जाएं। अगर आपको लगता है आफ्टर पीरियड टाइम दिस इज नॉट maturing, then you should always try out other issues, other problems that are there. But end of the day, I think you'll have to go deep down into a problem rather than doing horizontal work. That is the crux of a PhD program, and that is how you'll succeed. मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जो PhD प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरह चले। और मैं समझता हूं कि आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो आने वाले कुछ वर्षों में इस तरह से बैठ के किसी और सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बधाई दे रहे होंगे या उनको शुभकामनाएं दे रहे होंगे। इसी के साथ मैं पुनः ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी को भी धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आपको संबोधित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। I thank Professor Dhawan for his inspiring words. It's pleasing to listen how PhD is helpful in shaping
research career of an individual and giving an overview of the principles to follow during research career. I can correlate my PhD journey, sir, here with your words. I should thank here the initiatives of our VC sir and Professor Dhawan for the collaboration MOU between CBMR and CSJMU. We assure you, sir, we will utilize the resources of CBMR and to the best of their benefit for the research excellence. Thank you very much, sir, once again. To move forward, we are delighted to have another eminent personality, Professor Sandeep Verma, with us today as our chief guest. I'm pleased to read the brief accomplishments of Professor Sandeep Verma. Professor Verma completed his doctoral work from University of Illinois Medical Center, Chicago, 1994, followed by postdoctoral studies at Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA, and at Max Planck Institute for Experimental Medicine, Germany. He joined the Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Kanpur in 1997, where he currently holds the positions of Professor of Chemistry and Sri Devraj Endowed Chair Professor. He is also an affiliated faculty in DST Thematic Unit of Excellence on Soft Nanofabrication and Center for Environmental Science and Engineering at IIT Kanpur. His work has been recognized by DAE SRC Outstanding Investigator Award 2012, Shantiswarup Bhatnagar Prize in Chemical Sciences 2010, CDRI Award of Excellence in Drug Research 2009, Swarna Jayanti Fellowship 2005, BM Birla Science Prize 2004, to name a few. He is an elected fellow of Indian Academy of Sciences and National Academy of Sciences, India. He serves on the editorial advisory boards of Chemical Communications, Chemistry and Biology, and Journal of Chemical Sciences. His research interests include metal nucleobase interactions, peptide protein self-assembly, and programmable soft matter. Professor Verma received several awards, including prestigious Shantiswarup Bhatnagar Award in Chemical Sciences and DAE SRC Outstanding Investigator Award, Department of Atomic Energy, India. He has about 85 publications and 11 book chapters for his credit. With this brief introduction, may I now request Professor Sandeep Verma to kindly deliver his lecture, please. Namaskar. Thank you very much for your words of introduction. First of all, I would like to thank Honorable Vice Chancellor, Professor Pathak, Dean Research and Development, Professor Gupta, and all colleagues who have extended this wonderful invitation to be a part of this discussion group today, where we are addressing new and ongoing PhD students. Listening to Professor Gupta, the kind of changes that have been brought by Honorable Vice Chancellor and your efforts to digitalize the workflow, it is really remarkable, and I give all of you my felicitations for the work done and for creating opportunities for PhD students, which are going to be the right vehicle for transformation within university and off the university. So with these words, I would like to start my presentation by sharing my screen. I have Okay, screen sharing enabled. PPT. Are you able to see the screen, please? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. It is visible. Thank you so much. So what I wanted to do today is to, although the lecture may be a little pedestrian for all of our colleagues, but for students, I would like to point out, what are the essential ingredients that are required to prepare you for a successful PhD career. And towards this end, I would like to start with what is a life cycle of a PhD student. So if you look at the starting process and the initiation as a PhD student, you would inevitably recognize that it all starts with the admission to the right school in the right department where you have chosen to study for next 3 to 4 or 4 to 5 years of your life, contributing towards research, doing working in a significant problem, and interacting very closely with a mentor who is going to guide you through this endeavor, through this journey. So once you are
admitted in a school, in a department, what essentially you look forward to is a number of courses, a number of examinations, and you are going to embellish your knowledge by interacting with colleagues, interacting with professors from various departments, and also by attending seminars within your school, within your department, or within the university, so that your research work, which is integral part of PhD, is going to be benefited by your experiences in such type of academic interaction. So seminars and conferences are important. And I was again very happy to hear that there are going to be provisions within university driven by Professor Pathak, which would allow our students, or which will allow Shahuji Maharaj University students to participate in seminar and international conferences. Essentially, when you go through the life cycle of research, you are eventually going to get a number of publications and a good thesis, which will lead you to a degree that is going to be granted by the university. So this cyclic process, you have to go over and over and make sure that you do not lose interest, you do not lose your patience, and you remain passionate about your research so that you can get an excellent degree at the end of your academic career at CSJM University. So what is PhD? PhD, essentially, in my opinion, you are heading towards higher learning. It is an arduous road ahead. It is a difficult proposition. It requires a lot of commitment. So what would essentially happen at many points of time during your career, you are going to question yourself whether you are cut out for a PhD, right? So you would question yourself whether I have done the right thing or whether I have not done the right thing, and that may demotivate you, and that would be a pitfall you would like to avoid. So do not get demotivated, and you move ahead with full passion, full perseverance to realize your PhD. But again, while you are going in this direction, what you would find is you would be questioning yourself one more time, is the reward, or is getting a PhD degree going to solve your career issues, your career problems, and is the reward worth the effort? So 3 to 4 years of hard work, working with a professor, working on a singular problem, is it worth the effort? Then this question again could demotivate you. Please do not fall in such traps, and remain motivated so that essentially at the end of your tenure, you could be proud of yourself by getting a decent degree, by getting an excellent degree with good publications and a thesis that you could be really proud of. So PhD essentially is an opportunity for involved learning. So what we have done till now, when we do our undergraduate and postgraduate education, we sit in a classroom of say 30 people, 100 people, and we listen to a number of professors who would come and lecture us on their topic on a given subject. We assiduously read them up, put the right or correct answers in the examination, and get our degree. But here, a PhD is somewhat different. It is involved learning. It is a learning that requires close interaction with your supervisor. So it is essentially a full-time engagement within a university system to get highest degree of the land. So PhD is so important when you are heading towards an academic career that it requires full-time engagement with a mentor, with a supervisor. And you should be very proud that when certain number of students or a set of students choose to do PhD, they are the most talented individuals who have made up their mind to involve in deep inquiries within their subject, right? And that requires engagement with faculty. It is really a close supervised learning under the mentorship of an expert within your department, or when you are doing a co-supervised PhD, 2 or more mentors within multiple departments to give you the right kind of supervised learning in a given or a chosen research area. So when you look at research area, you not only have to sharpen your skills in terms of your tools and techniques, but you have to have the right and real focus on research objectives, so that the granularity of workflow, what I mean by granularity of workflow means there is a coarse granularity where this is the general area you would like to work on. Then there is a finer granularity where you look at specific objectives of your thesis. The question you would try to answer, the answer of what is called as so what. I mean, if you were to do PhD in a given area, what kind of difference would you make to literature?
what kind of difference would you make to our knowledge domain? Those answers are going to be answered, or those answers would give you focus in terms of your research objectives and the workflow that you would follow during the course of your PhD. It is not always easy, but what I urge all of our students is that you should try to work on multiple projects. So you should engage on more than one number of problems so that you could not only engage within your discipline, but also bring in the potential or the possibility of having multidisciplinarity and in your thesis, so that you can learn a lot of tools and techniques giving you the scope of multitasking. And all this would be important because you have a kind of wider time frame, 3 to 4, 4 to 5 years of learning, of very involved learning, where you can develop the skills, these skills which are required for interdisciplinarity as well as multitasking when you look at tools and techniques. So essentially, when you listen to all this, you should take home a message, what is a basic DNA of a good PhD, what you should inculcate to become, to have a good PhD. First and foremost is that you should have passion for research, right? You should be, as a student, very energetic in lapping up the problems. The problems should be very immersive and deep, thoughtful in nature, followed by a disciplined investigation. That all what's going to be bundled when you look for passion for research. The project that you are hoping to undertake should have relevance, should have modernity, relevance, and complexity, and absolutely no obsolescence. It cannot be too jaded, too old a problem that you're going to touch again. So relevance and complexity would bring in what is going to be a deep problem or a futuristic problem. And these deep and futuristic problems that you would tackle as a PhD student would bring in the required interdisciplinarity. It would allow you to build expertise over a period of time, so that once you get your degree, you could go ahead for a career, be it an academic, be it an industry. You could be taken up as a potential applicant which has high degree of knowledge, which has the right kind of expertise and tool set to aid and augment a given organization. You should also always be looking for peer group interaction. So what it means is that when you talk to your professors, when you talk to your a set of instructors within department, within school, or within university, that peer group interaction should be good for your learning. It should add to your learning. It should be experiential, means you should get good experience or a novel experience each time when you look at these peer group interactions. And overall, that should be very thoughtful. So you should be looking at such interactions that are going to augment your knowledge and essentially offer you the right kind of platform to build your career upon. So as a PhD student, one should always try to make your work count. When you look at your research work, the way you are taking or the direction that you're taking to bring up your thesis, it should be counted in terms of, a good thesis or a successful research outcome. And for such possibilities, you have to have right kind of research preparedness. And research preparedness, and a few points I have listed on this slide, it cannot evolve overnight. I am still evolving. Many of your mentors are still evolving. And so this research preparedness evolves over a period of time. The first and foremost being that you should have the right subject foundation. So if you want to do PhD in engineering or in science or in humanities, the subject or the discipline that you choose, you should build up the right kind of foundation to carry out research. And second one is you have to have research aptitude. So what I mean by research aptitude is that you should be able to look at literature. You should be able to assimilate what has been reported in literature thus far and try to bring in your problem with the right perspective of the research that has already been published in literature, and bring in that assimilated version of knowledge to see how your research can move forward. So decidedly, when you look at such research papers, book chapters, and digital knowledge domains, what essentially you should need, or you would need, is the right kind of communication skills, and communication not being limited only to your verbal communication, but it would also require certain soft skills, including writing. You should have
creativity in writing. You should know how to assimilate written material to get to reviews, to research papers that may hold value for you. And it was also pointed out by Rosa Dhawan. The discipline and dedication is extremely critical for a PhD student, and so are ethics and integrity. So Professor Dhawan also pointed out about, and also Professor Gupta, that how Turnitin and such platforms are being used within university to bring out the right kind of, checks and balances to not allow you to indulge in plagiarism or such kind of academic misconduct. So it is extremely important when we report our results, when we report our findings to literature, the ethics and integrity has to be a part of your learning process. So finally, at the end of the day, when you are trying to sum up your research, you are essentially going to publish a research paper. You are going to publish a good thesis, and that is the gamification of PhD. So when you look at such kind of outcomes, you are gratified by getting a research paper. You are going to be gratified by getting an excellent thesis. And research papers, as we all know, these are individual documents which you write it along with your research supervisor or research supervisors, and you would use the data that you have gathered over a period of time during your PhD and write up a research paper, while thesis is the ultimate academic document, which is so very personal to you, that is written under the supervision of a mentor. But at the end of the day, you are the sole author of that PhD thesis. So papers would have multiple authors, but the thesis would have a single author that is going to be only forwarded by your thesis supervisors, yes, this thesis has been done under my supervision by this particular individual. So there is a very dramatic difference between the two, but taken together, they are gamification of PhD that would give you satisfaction, and you would be able to look back upon your hard work after a period of time and to see and to realize what kind of work that you have put in for such kind of academic degree. So for all this, you have to train yourself. So the question is how to train yourself other than what is already known to you as a subject matter. So I am assuming that when you're going to do PhD, you have trained yourself in your discipline or in your academic area of interest. But what else you need is creative writing skills. It is imperative that you develop the right kind of writing skills, the right kind of public speaking, where you can communicate your results, where you can speak in seminars and in conferences. And all this would come from attending seminars in your own discipline as well as in other disciplines, so that you get to know how people speak, how they articulate, and what is the most impeccable delivery methods available or the styles available for communicating your research, communicating your research to a given audience. So how is it going to help all of us? Or you as a student, that you would come across as a knowledgeable individual, and it would certainly aid your career prospects. So after your PhD, or while you are doing your PhD, you are constantly in the sidelines or by the sidelines, you will be trying to build your career. So what I mean is that a question comes to your mind, or would come to your mind, is that what next? Once I get a PhD, where do I go from here? And that is the thought process of building your career. And it brings to the career conundrum. And I have taken this cartoon basically to tell you that, the kind of mental processes that all of us have gone through, and you would also go through, is that one is that how you discuss with your supervisor the future plans, and you may talk to her or him that I'm going to be a professor at a major research university after I graduate, after I do my postdoctoral work. But you would essentially realize that the challenges are multiple, and the real plan may turn out not as an academic career or in industry, but you may have to look for other career alternatives. And I always tell my students that the secret plan that you may have in your mind is that you may want to leave everything after PhD and become something totally different. And my own students have become entrepreneur. Right now, one of my students has a multi-crore company that he runs from Hyderabad, and he has
stopped research altogether. He has become almost like a business magnate or a manager rather than a scientist. So there are plans, then there are secret plans, and there are plans that would work out eventually over a period of time. So you be prepared for all of them and how to prepare for it, right? So once you look at post-PhD opportunities, if you want to do a postdoctoral fellowship, you really need broad-based knowledge. So you will have to go into various domains so that you do not duplicate your scientific understanding or your research understanding as a single point agenda after your PhD, so that you could gather and acquire broad-based knowledge. That would require a lot of subject understanding, your ability to assimilate and have strong writing skills. And of course, all this can be, you can develop this over a period of time. And how is it going to help? Because many of these postdoctoral fellowship requires that you write a research proposal. So understanding, assimilation, and writing skills will allow you to write good research proposal for various fellowships. And that is going to be very, very essential as you develop yourself for an academic career, especially for a postdoctoral career. Looking at an academic career, you would really need a good broad-based knowledge, research background, papers, and tools and techniques that you can apply for your future generation of research scientists. If you were to become a lecturer, assistant professor, or a professor in a given university, so that you could have the right kind of clarity of concepts, creativity and originality to start your own research program. And that is very important because it would allow you to have the right inclination towards originality, towards creativity. And of course, then you can build up a team around your research problem, having the right kind of infrastructure available within a university. So if you look for an academic career, what else is needed? You have to have the ability to persist, have to have self-belief and patience, and that would allow you to develop an academic career. Final few slides, looking at career in industry. When you look for industrial jobs, you require solid knowledge and you require certain papers, patents, tools and techniques that are relevant for a particular industry. And in industry setting, you would really need to have the collaborative spirit developed while you are doing PhD and the ability to bring in innovation to a research problem, right? So all this would make you more industry relevant, and that would allow you to develop develop yourself for a career in industry. So what else you would need to go to industry is you should be looking at working in interdisciplinary groups, work on tight timelines. Industry does not allow 2 to 3 to 4 years of turnaround time on the return on investment, return on R&D investment. So the tight timelines are needed. And of course, you have to develop with the help of your university, with the help of your department, the right kind of industry contacts so that after PhD, you could be absorbed in a given industry. So the final slide, I urge all the students that you please be the catalyst of change. You have got an excellent opportunity to do PhD in such a great university, CSJM University Kanpur, who has excellent colleagues. You have the right kind of infrastructure developed by Honorable Vice Chancellor. Please make use of it. Please make use of the knowledge clusters that Rosa Dhawan talked about in Lucknow as well as in Kanpur, so that your research does not get shortchanged by not having an equipment, by not having the right kind of journals. Please talk to us, please engage with us, and I wish you the very best in your future careers. And finally, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity, and my fellow panelist, Professor Alok Dhawan, Director, CVMR, who has been a major motivator in the area of research, in the area of education. So you have the right kind of collaborations available between CSJMU and CVMR. With these words, thanking Honorable Vice Chancellor, I wish all of you the very best for your future. Jai Hind. Yeah, I thank Professor Sandeep Verma for throwing some light on the importance of collaborations, publications, communication skills, seminars, conferences, and writing skills for a PhD scholar. It's definitely motivating for the upcoming scholars in all the subject areas, including science and humanities. Thank you very much, sir, once again. To move forward, I request
our Honorable Vice Chancellor, a dynamic personality, Professor Vinay Kumar Pathak ji, to address the gathering and deliver his remarks. I think there is some connection problem with VC sir's. Yeah, I think some network issues. Meanwhile, I request our Pro Vice Chancellor, Sir, Professor Sudhir Kumar Awasthi ji, to address the gathering and to give his blessings to the upcoming scholars. So may I request Professor Awasthi ji to take Am I over? audible? Yes, sir. My voice? Yeah. Yes. Yes. Dr. Sandeep Verma, Secretary SERB, Dr. Alok Dhawan, Director of CBMR, my colleagues, R&D Dean, Dr. Varsha Gupta, Dr. Harsha, Dr. Sweta Pandey, Dr. Divakar, and various other colleagues who have joined online, and students, and those who are joining us in the PhD program. It's really a proud privilege to be a part of this program, orientation program, which is meant for motivating the students of pre-PhD course, which is going to be launched in 2 or 3 days from now. We have seen the performance of our students last year, and this year also, we are going to improve the performance of our PhD students under the guidance of our Vice Chancellor, who is very energetic, Professor Vinay Kumar Pathak ji. He is a driving force behind all the changes which are occurring in this university, especially in the sector of research, whether it is science and technology, or humanities subjects, or art and culture, in various other subjects. Some new initiatives have been taken, some new guides have been included in the core group of PhD supervisors. So they are doing their best, and I believe that in coming few years, we will see the change which we have induced in our students, in our faculty, and in the overall atmosphere of the university. As far as research is concerned, since we are beginning, this is the first step of the pre-PhD course, we must define what topics are to be taken for the research work. Keeping in view the broad spectrum, and as per the theme of India, as per the, you can say, the dream of our beloved Prime Minister, actually the India has to become self-reliant in coming few years, in next decade or so. We are going to be the largest economy of the world, and this is not to be emphasized that in very next year we are going to be the largest populous country in the world. We will defeat China as far as population is concerned, and in 2050 we will become 1.6 billion. So keeping in view the needs of this large population, we have to actually define the goals of the research work, which we are doing in different sectors, be it agriculture, be it science, be it humanities, art and culture, etc. So in keeping in view the mandate of the government, this message has been given to the various funding agencies which are involved in the research work and conducting research work, or granting some money, some ex gratia payment to the scientist. This mandate has been given clearly that science, agriculture, art and culture should be actually tuned in such a way so as to prepare India for the coming few years. And keeping in view this large population, we have to ensure the food security, we have to ensure the health care, we have to ensure all sort of facilities, even education is required.
So all these facilities are to be provided by you people, and there should be some scope of research work in all these areas. How we can cope up with this growing population, how we can combat with the next decade infections which are coming in the way of the development. So what I mean to say that while defining our research goal or research objectives, since a number of supervisors have also joined this meeting, they must try to take those topics which have a larger applicability in the country. I mean, in the field of agriculture or in the field of science and various other sectors. Only research for only academic purpose is not sufficient. We have to move from lab to land, as the motto of our Prime Minister, that we have to do our best in lab, okay, but this knowledge has to be imparted to the farmers, to the artists, to the scientists, and various other sectors. All the stakeholders must be benefited from this knowledge which we are creating through our research. So for academic purpose, the research is being done, okay, but if it is for the benefit of the mankind, for the benefit of our country, and keeping in view the huge demands of our country in combating those problems which are going to arise because of this large population, we must amend we put some amendments in our objectives so as to make India self-reliant as far as research is concerned. As far as a lot of work has been done in science, and you have heard Dr. Sandeep Verma and Dr. Rosa Dhawan, who have already described the way we can do research in science. But humanities are equally important. The social fabric of our country has to be strengthened by the art, culture, and the traditions which are being run in our country from ages. From 1,000 years back, we have been a rich tradition. So as far as humanities subjects are concerned, be it psychology, art, culture, drawing, painting, even journalism, we have to put our best in inculcating those habits which can unite India. As far as my knowledge goes, the traditional IKS, Indian knowledge system, has to be explored for the solutions which are actually posing and they are actually proved hampering the growth of our country. So we can go in our traditional knowledge, which is still unexplored. I'm really sorry to say that our Indian traditional knowledge system has not been explored fully. Our Vedas, Upanishads, they have a lot of science there, and they have an art how to unite India. So through culture, through art, if we can put some objectives in our synopsis, that we are putting our potential in developing India in such a way so as to make this country strong, self-reliant, this will be a great achievement from the research sector to India. So I must congratulate all the team of the R&D for organizing such an orientation program, which is meant for motivating the students, not only students, but also the supervisors. There is a concept of reverse mentoring. There is a concept of reverse mentoring, and supervisors should not think that they are the super knowledge creators. Sometimes the students also have such an idea which can click your mind. So this one-way traffic has to be converted into two-way traffic, and sometimes a student can mentor the supervisor. So this is reverse mentoring phenomenon has to be utilized in research also. Supervisors are meant for imparting good knowledge, good skill,
especially the technique part, which has to be given to the students for a good research. And students have the responsibility to ask questions, to make an inquiry. This is the first prerequisite condition of the PhD course. So with all these dreams in our mind, I believe that our university will come forward in creating good PhD students, which will impart their knowledge, which will contribute their knowledge in the overall development of our country. Thank you very much. I thank Professor Sudhir Kumar Avasthi sir for his words of wisdom by linking the Indian heritage and science. Now we are here with our Honorable Vice Chancellor and the dynamic personality, Professor Vinay Kumar Pathak sir. I request sir to address the gathering and deliver his remarks. Sir, please. कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धवन, डॉक्टर वर्मा, हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब डॉक्टर अवस्थी, एमिनेंट प्रोफेसर्स, हमारी डीन रिसर्च डॉक्टर वर्षा जी, हमारी रिसर्च की टीम और हमारे प्यारे विद्यार्थी जो आज इस CSGMU के बड़े परिवार को ओरिएंटेशन के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे विचार और बहुत अच्छी टॉक्स सुनी है। डॉक्टर धवन ने शोध की गुणवत्ता, डॉक्टर वर्षा ने शोध के बारे में बदलते हुए इकोसिस्टम, डॉक्टर वर्मा ने शोध का ज्ञान और शोध की विषय में विषय वस्तु और डॉक्टर अवस्थी ने हमारे पुरातन ज्ञान और पुरातन विज्ञान के बारे में चर्चा करी। मुझे आपसे 2-3 चीजें कहनी है। हम लोग पूरे इकोसिस्टम को शोध के स्टेट विश्वविद्यालयों में बदलने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी डीन रिसर्च और रिसर्च की टीम को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि वो लोग इस चेंज के एक एजेंट बने। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बहुत समय तक हम लोग ये विचार करते रहे कि जो विश्वविद्यालयों में शोध है वो ऐसे ही हम डिग्री प्राप्त कर लेंगे और हम बिना किसी शोध के, बिना किसी गुणवत्तापरक शोध के कार्य जो है कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता हम लोगों में डेवलप हो गई है कि हम शोध को खरीद सकते हैं, हम शोध किए बिना शोध कर सकते हैं, या शोध कोई पैशन का वर्क नहीं है, डिग्री की खरीदने की वस्तु है। मुझे लगता है इससे हमें बचना चाहिए और हमारे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की पूरी शोध की टीम अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा रिसोर्सेज इस बात के लिए दे रही है कि हम लोग जो हैं वो चीजों को प्रॉपर ढंग से करें। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इसमें हम लोगों की इस यज्ञ में भागीदारी करनी चाहिए। मैं तो डॉक्टर वर्षा मैडम को कहूंगा कि उन्होंने अच्छी स्कीम्स बताई है, उसी स्कीम में हम लोग ये भी जोड़ दें कि जो भी शोधार्थी हमारा अच्छे पेपर पब्लिश करता है, कोई अच्छा शोध में काम करता है, उसको हमारी वेबसाइट के हॉल ऑफ फेम में रखें और हर वर्ष एक दिन तय कर लें कि जो भी हमारे शोधार्थी हैं भाषा में, सामाजिक विज्ञान में और हमारे जो साइंसेस में है, विज्ञान और अभियांत्रिकी में, इसमें जो भी अच्छे पेपर्स पब्लिश हों उनको बुलाकर हम कुछ कैश अवार्ड और कुछ ऐसे लोगों का शोध में जरूर वेलकम करें। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैडम ने ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, हालांकि मैं 86 लोगों को ही देख पा रहा हूँ, बड़ा शोध प्रोग्राम रखना था। मेरा अपना मानना है कि लाइव रिकॉर्ड हर टीचर को, हर स्टूडेंट को हम लोग पुश करेंगे और चीजें जो हैं होंगी तो ये बेहतर ढंग से आगे चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और हम इस शोध की यात्रा में आगे बढ़ें, शोध की यात्रा में आगे चलें, ऐसा मेरा मानना है।
Thank you very much, sir. Like, it's really like you being the catalyst of the change for research at university. It's always inspiring to listen to you. And whatever the initiatives you are taking, they are really kind of boosters for the research at CSGM University. Thank you very much, sir, once again. So this inauguration ceremony is coming to an end, and we have lined up with invited talks from the eminent personalities again following to this session. I now thank Professor Alok Dhawan and Professor Sandeep Verma for their time and for their valuable inputs. And I thank our Honorable Vice Chancellor, sir, and Pro Vice Chancellor, sir, for giving their words of wisdom and encouraging the students to do research here. I now hand over the podium to Dr. Shweta Pandey to continue the session with the orientation program. Over to you, Shweta Pandey. Thank you, Dr. Harsha. I, Dr. Shweta Pandey, on behalf of our entity, once again welcome you all to the next session of orientation program. We are delighted to have two eminent invited speakers with us who will be sharing their vast knowledge and experiences in the area of research, which I'm sure you all will be benefited. So we welcome our first speaker, Professor Sudhir Pratap Singh. We are delighted to have you, sir, today. I'm pleased to read the accomplishments. I'm pleased to read the accomplishments and about Professor Singh. Professor Singh is currently working as a professor at Center of India Language School of Literature and Culture Studies, and he is Dean of Students at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has a vast research experience and output in terms of quality number of journal papers, edited books, chapters. He has delivered more than 70 online and offline special lectures and talks at various academic institutions. He has been awarded by the Directorate of Higher Education, Government of NCT of New Delhi as a best teacher, and there are many such more achievements. I now, without taking much time, I now request Professor Singh to please deliver his talk. Over to you, sir. जी धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर पाठक जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये मैं उसी प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। उस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि कानपुर विश्वविद्यालय, अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, हमारे ज़माने में कानपुर यूनिवर्सिटी कहा जाता था, तो इस तरह के रिसर्च को लेके गंभीर चर्चा ओरिएंटेशन के रूप में रखना शुरू किया, जिससे विद्यार्थी आए तो जान पाए कि हमें किस दशा और दिशा में काम करना है। माननीय कुलपति डॉक्टर पाठक जी, पीवीसी सुधीर अवस्थी जी, प्रोफेसर धवन, प्रोफेसर अवस्थी जी, डियर स्टूडेंट्स, डीन रिसर्च और उनकी टीम, सादर प्रणाम। अभी मैं आप लोगों का जो कार्यक्रम का फर्स्ट सेशन था उस व्याख्यान को सुन रहा था। मैं डॉक्टर अवस्थी को सुन भी रहा था और जिस विषय क्षेत्र के बारे में मुझे बातचीत करनी है और ये एक तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो बेहतर होता है कि हम लोग संवाद की शैली में है, ना कि व्याख्यान की शैली में। और बेहतर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं संवाद की शैली में हूँ, बातचीत की शैली में। आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। मानविकी के संदर्भ में मुझे बातचीत करनी है, विशेष तौर पे साहित्य के संदर्भ में, जो विभिन्न भाषाओं के साहित्य हैं उनके बारे में। इस संदर्भ में जब मैं वर्तमान समय में मैं एक मूलतः कह सकते हैं कि मास्टर्स और रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उसमें आज पढ़ा रहा हूँ, उसमें रिसर्च कर रहा हूँ, उसी में पढ़ा भी हूँ। तो मूलतः ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है एक तरह से, या कह सकते हैं रिसर्च का विश्वविद्यालय है। और यहाँ बैठ के जब मैं हिंदुस्तान के केंद्रीय विश्वविद्यालय या जो स्टेट के यूनिवर्सिटीज उनको देखता हूँ, और विशेष तौर पे उस क्षेत्र में जब मैं साहित्य और मानविकी के अन्य विधाओं के बारे में देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पिछले 10-15 वर्ष में क्या परिवर्तन आया है, क्या डिग्रेड हुआ है, क्या हमको जोड़ने की बात। और इसको देखते हुए, जैसा अभी पिछले सत्र में भारतीय चिंतन परंपरा के बारे में बातचीत हो रही थी, तो हमें किस विषय की तरफ जाना चाहिए और रिसर्च का उद्देश्य क्या है, और रिसर्च का जो आउटपुट होगा वो
देश समाज सबके हित में कैसे होगा, इस सब संदर्भ में बातचीत करनी चाहिए, और हम नहीं कर पा रहे हैं। विशेष तौर पर अगर मैं 3 बात को ध्यान में रखूं कि आज के समय में जो रिसर्च है विशेष तौर पे मानवीय के संदर्भ में, उसके 2 भागों में हम बांट के देख सकते हैं। एक तो जिसको बोलूंगा मैं, अगर अपनी शब्दावली में बोलूं, सामान्य शोध। सामान्य शोध किस लिए? जो एमफिल या पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं, और वो किसी भी रूप में डिग्री प्राप्त करने का एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं एलिजिबिलिटी अपनी साबित कर पाऊं कि मैं अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आ सकता हूं और शोध करा सकता हूं या कर सकता हूं। ये बिल्कुल उद्देश्यपरक है। इसकी दशा दिशा क्या है, इस पे बातचीत अलग से हो सकती है। दूसरा होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करना, या कह सकते हैं कि जिसका मुख्य उद्देश्य है शोध के लिए शोध करना। ये हमारी अभिरुचि, हमारी ज्ञान, हमारी जरूरत, इन सब का एक मिला जुला रूप होता है, और ये बनने के लिए हमारी दृष्टि, या कह सकते हैं हमारी विश्व दृष्टि इसके पीछे काम कर सकती है या करती है, या कह सकते हैं कि एक तरह की विचारधारा काम करती है। ये बात दीगर है कि इस विचारधारा को बनाने की प्रक्रिया में संपूर्ण चिंतन धारा इसमें शामिल होती है, हमारे ज्ञान विवेक की एक जो सीमा है वो शामिल होती है, उसके आधार पे हम काम कर सकते हैं। और दोनों तरह का अगर मैं उदाहरण दूं, जैसा अभी माननीय कुलपति महोदय बोल रहे थे कि हमें डिग्री प्राप्त करना है, इसके लिए रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत सारे आयाम अपना लेते हैं कि हम एक सामूहिक दिनचर्या में काम करते हुए रिसर्च कर डालते हैं, पीएचडी लिख देते हैं और जमा कर देते हैं, और हम जैसे मूल्यांकनकर्ता जो होते हैं वो मजबूरी में जाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि अगर 5 का पैनल है और मैं रिसर्च, हमारे पास थीसिस आती है, मैं रिजेक्ट करूंगा तो कोई और चेक करेगा, और अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो अगली बार से मैं बुलाया नहीं जाऊंगा, अगली बार से मैं बुलाया नहीं जाऊंगा तो हमारे जैसे अध्यापक की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये भी होता है। लेकिन ये है, इस दशा पे आने से पहले की दशा सोचनी है कि इस तरह का विषय का चुनाव क्यों हुआ, जो शोध की प्रवृत्ति जिसके बारे में कि विषय का चुनाव क्या हुआ, शोध के प्रमुख सोपान का पालन किया गया कि नहीं, शोध की प्रविधियों का उसमें अनुपालन किया गया कि नहीं, शोध के विषय और विद्यार्थी का सामर्थ्य और सुधार, और उसे कह सकते हैं सुपरवाइजर का जो अपना ज्ञान है, उसकी जो सीमा है, उन सबके बीच में कोई तालमेल हुआ है कि नहीं। ये सब नहीं हो पाता है और इस तरह का काम हो जाता है, और हम जैसे किसी भी अध्यापक के पास आता है, और तब हमको उसका मूल्यांकन करते दौरान विकल्प नहीं होता। हमारे पास 2 विकल्प है, तो रिजेक्ट करो या संशोधन के साथ या पास कीजिए। लेकिन कहीं ये विकल्प नहीं होता है कि मेरे रिजेक्शन के बाद वो पीएचडी रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं होगी। होना तो तय है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करवाएगा। ऐसे स्थिति में जो डिग्री प्राप्त करने के लिए शोध है, उसका दिशा और दशा क्या होगा, इससे ज्यादा मुझे संकेत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरह का जो शोध मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे वैश्विक दृष्टि के कारण, हमारे विचार के कारण बनता है। अगर मैं हिंदी साहित्य का हूँ, हिंदी से उदाहरण लेते हुए बताऊं कि मान लीजिए कि मुक्तिबोध ने, एक कवि है, मुक्तिबोध ने काम करते हुए कामायनी पर काम किया और किताब लिखा, कामायनी पर पुनर्विचार की किताब आती है, उसका मूल्यांकन करते हैं। अब ये जो कार्य है, या मैं अपने हिंदी में प्रोफेसर नामोर सिंह की बात करूं तो वो लेके आते हैं कविता के नए प्रतिमान। अब एक रिसर्च आता है, ये किसी डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया है, ये थियरी है जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में हम शोध की दशा दिशा तय करें। लेकिन इस तरह के काम करने की अपनी जरूरतें क्या हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है, सरकार अपने किस तरह के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो जो शोध की अपनी सीमा और सामर्थ्य हो जाती है, उसकी दशा क्या है। ये दोनों सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर लग रहा हो, लेकिन ये दोनों विषय मैंने इसलिए रखा कि हमारी अपनी आज की समस्या भी है, चुनौती भी है, और इन दोनों की चीजों को ध्यान में रखते हुए हम शोध पे बातचीत कर सकते हैं। अगर भारतीय चिंतन परंपरा में मैं जाऊं और बात करूं कि हमारे यहाँ साहित्य का उद्देश्य क्या रहा है, हमारे यहाँ रिसर्च की स्थिति क्या रही है, और रिसर्च के बारे में पुराने चिंतन परंपरा में क्या कहा जाता रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको केवल सामान्य भाषा में, मतलब आपको चलताऊ भाषा में बातचीत, कुछ भी ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है, यहाँ ज्ञान बढ़ाने की कोई जरूरत ज्यादा नहीं है। और तब मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे यहाँ शोध की दशा दिशा के बारे में जो बात कही गई है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सामान्यतः हम पश्चिमी जो है साहित्यकारों को कोट करते हैं, हमारे पास भी दुनिया की परिभाषाएं हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या कहा गया है, जिसके लिए एक बहुत बेहतर शब्द है
ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में काम करने के लिए, विशेष तौर पे ह्यूमैनिटीज में काम करने के लिए एक शब्द है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, ह्यूमैनिटिक्स। अब ह्यूमैनिटिक्स क्या था और ह्यूमैनिटिक्स की पहली परिभाषा क्या थी, और इसके बारे में हिंदुस्तान के किसी साहित्यकार के द्वारा लिखा गया परिभाषा नहीं है, ये पाश्चात्य का शब्द आया, क्योंकि ये शब्द प्रयोग किया गया था पहले बाइबल पे रिसर्च पे करते हुए, बाइबल के बारे में बातचीत करते हुए। बाद में तमाम धर्मशास्त्र के जो भी अध्ययन के हमारे केंद्र में रहे धर्मशास्त्र, उसके लिए जो भी टर्म प्रयोग किया गया रिसर्च में, उसे ह्यूमैनिटीज के रूप में प्रयोग किया गया। इसमें बाइबल, ज्ञान साहित्य, दर्शन, और कालांतर में ये शब्द प्रयोग होकर साहित्य के क्षेत्र में आ गया। साहित्य को भी ह्यूमैनिटीज के अंदर रखा गया, और इसके लिए कहा गया कि बाद में ये भी कहा गया कि ह्यूमैनिटिक्स और जो है कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ क्या होता है, इसको एक शब्द होता है भाष्य, तो ह्यूमैनिटिक्स और भाष्य एक है। फिर इसमें भाई डिबेट चला कि ह्यूमैनिटिक्स पे पाठ क्या है और भाष्य क्या है। भाष्य पाठ केंद्रित होता है, जबकि ह्यूमैनिटिक्स पाठ केंद्रित नहीं है, वो मौखिक परंपरा, संवाद, या जो कह सकते हैं कि जो एस्थेटिक्स है या जो स्थापत्य है, इन सबको लेके भी काम होता है। बट भाष्य में ऐसा नहीं हो सकता है। अब इसको लेके बहुत डिबेट चलता है, लेकिन मूलतः ये साहित्य में या कह सकते हैं शोध की प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है कि नहीं, ये बात अलग से सोचने की है। इसी के सापेक्ष जो है सेमेटिक शब्द चलता है, जो आयुर्वेद को लेके चला था, और बाद में अर्थ में मतलब इसको कह सकते हो कि जितना भी मेडिकल साइंस को लेके शब्द आता है और उसको लेके बाकायदे बातचीत होती है, यहाँ उस पर बातचीत मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ह्यूमैनिटिक्स से पहले भी, ह्यूमैनिटिक्स के बाद की परंपरा में भी भारत में जो रिसर्च की पद्धति रही क्या रही है। हमारे यहाँ साहित्य मतलब काव्य रहा है, और काव्य को अध्ययन करते दौरान उसके तमाम सिद्धांत हैं, जिसको भारतीय चिंतन परंपरा में भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत कहा जाता रहा है। और उसमें हमको ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, दुनिया भर के सिद्धांत हैं, उन सबको लेके काम करते रहे, वो चाहे संस्कृत साहित्य रहा हो, चाहे हिंदी साहित्य रहा हो, या किसी भी साहित्य पे। लेकिन कालिदास पे काम करते हुए एक हमारे संस्कृत के आचार्य थे मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ ने इस पर रिसर्च करते हुए कालिदास के संदर्भ में एक परिभाषा दी। उन्होंने बोला कि ना मूल्यम लिखते किंचित नापेक्षित मुख्यते। अब इसको लेके दो बात समझ में मुझे आई कि जो मूल है वही लिखते हैं। मूल मतलब जो वास्तविक है, जो यथार्थ, या कह सकते हो कि वही कहा जाएगा जिसका प्रमाण उपलब्ध हो, साक्ष्य। क्या रिसर्च के संदर्भ में सबसे आवश्यक तत्व नहीं था? अभी जो है इससे पहले जब स्लाइड प्रेजेंटेशन कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो मैं वहां देख रहा था कि उन्होंने इंडस्ट्री में ले आके देखने की बातचीत की और यथार्थ की बात की, शोध और सुपरवाइजर के संदर्भ की बातचीत की। वो सब बात यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मूल जो बात है कि शोध में कि क्या मूल के अलावा मूल क्या है, मूल की परख कैसे करेंगे? बिना प्रमाण के हो नहीं सकता। प्रमाण कहाँ से इकट्ठा करेंगे? लिटरेचर सर्वे करेंगे। लिटरेचर सर्वे करने के लिए क्या होगा? लिटरेचर उपलब्ध होना चाहिए। कौन सा लिटरेचर उपलब्ध हो? जो लिखित उपलब्ध है, जो अलिखित उपलब्ध है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम लिखित लिटरेचर को ही लिटरेचर मान कर उसका सर्वे करते हैं। लिटरेचर सर्वे साइंस में भी होता है। साइंस के लिटरेचर सर्वे और ह्यूमैनिटीज के लिटरेचर सर्वे में डिफरेंस है। लेकिन हमारे पास जो लिटरेचर है, अगर मान लीजिए कि मैं एक काम करना चाहता हूं अवध प्रांत में, कि अवध में जो लोक साहित्य है, उस लोक में सत्ता के प्रति जो आक्रोश रहा है, उसका स्वर क्या रहा? अब लोक में सत्ता का आक्रोश हमेशा रहा है। ऐसा नहीं कि गोदान लिखा गया और होरी आते हैं और वो बहुल संवाद शैली में बातचीत करते हुए राय साहब का कैरेक्टर लेके आता है। नहीं, लोक में सत्ता का विरोध हमेशा रहा है, और लोक रहा ही सत्ता के विरोध में है। मतलब अगर कह सकते हैं अपभ्रंश, संस्कृत साहित्य के विपक्ष में लिखते हुए भ्रंश आया। लोक भाषा तभी आती है जब मूल भाषा में बात ना कही जा सके या उनके मन की बात नहीं कह सके। मूल भाषा वो होती है जो व्याकरणनिष्ठ हो जाती है, और व्याकरणनिष्ठ होती है जो पढ़े लिखों की भाषा होती है। तो आम जनता अपनी बात किसमें कहता है? लोक में, लोक भाषा में, लोक साहित्य में। अब लोक साहित्य क्या लिखित रूप में उपलब्ध है क्या? 45 साल का हो गया उससे अवध प्रांत में रहते हुए। दुनिया भर के गीत मैंने सुने हैं, जिसमें शायद मैं एक साहित्य के रूप में अपने लेख लिखते हुए मैं कह सकते हैं कि सरकार राजनीतिक ना भी लिया जाए, जो सत्ता में रहे, उस सत्ता के प्रतिरोध का जितना मुखर रूप लोक में उपलब्ध है, लोकगीतों में उपलब्ध है, क्या उतना मुखर रूप लिखित लिटरेचर में उपलब्ध रहा है क्या?
और यदि नहीं रहा तो उस पर काम कैसे करेंगे। अच्छा, ये एक तो विषय ही हो गया। दूसरा मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए पांडुलिपि है हमारे पास। मैं अगर अवध घराने से उदाहरण लूं तो फैजाबाद राजघराने में बहुत सारा लिटरेचर उपलब्ध है उस समय को, जो हमारे ब्रिटिश पीरियड के इतिहास को भी नए सिरे से देखने की बात कर सकता है। अगर हम और जाए, हमारे पास एंशिएंट इंडिया में जाते हैं, मेडिवल इंडिया में आते हैं, तो हमारे पास बोलते हैं कि कहीं पे हमारे पास लिपि नहीं है, कहीं पे बोलते हैं कि नहीं, ये इसके प्रमाणिकता का कोई आधार नहीं है। यही लिटरेचर, यही पांडुलिपि जब जर्मनी में जाता है, जब यूरोप में जाता है, यूएस में जाता है, वो वहां बैठ के उस पर रिसर्च करते हैं और ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में कबीर कौन थे। तब मैं वहां के रचनाकारों का हवाला देते हुए बताता हूँ कि कबीर बड़े विद्वान थे। लेकिन मैं मगहर में जाके, मैं फैजाबाद में जाके, मैं काशी में जाके कबीर के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, जबकि अवधूत की परंपरा हमारे यहाँ है। ठीक है, हमारे यहाँ गोरख पंथ हमारे यहाँ से था, बगल में गोरखनाथ थे, पूरा पूरा पंथ नाथ पंथ हमारे यहाँ रहा है, सिद्धों की पूरी बानियां हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये पांडुलिपियां जब ब्रिटेन में जाती हैं या जर्मनी में जाती है तो हमारे लिए प्रमाणिक ग्रंथ हो जाती है। खुद से जाके हम पांडुलिपि पे काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन पांडुलिपियों को पढ़ने ना हमारे पास वक्त है, ना सरकार हमको उसके लिए पैसा अलग से दे रही कि जाके पांडुलिपि पढ़ूं, ना इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात है कि इन पांडुलिपियों के ना पढ़ने की वजह से हमारा जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तीनों में फाक होता जा रहा है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लेते हुए लोक का निर्माण हुआ जो पांडुलिपि के रूप में पढ़ा गया। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो सतत विकास की परंपरा में हम सभ्य संस्कृत हुए हैं, उसकी एक अपनी अवधारणा रही है उस क्रम में लिखते हुए। और इतिहास चूंकि लिख दिया गया है और सत्ता का इतिहास होता है दूसरे रूप में कहें तो वो हमारी बात को अपनी तरीके से कहेगा ही नहीं। ऐसे में हम उसी इतिहास का विश्लेषण करते रहते हैं और उसी संदर्भ में साहित्य को पुनर्सृजित करते रहते हैं, या कह सकते हैं कि रिसर्च को नए तरीके से देखने के बजाय उसी ऐतिहासिक, सामाजिक परंपरा में, आर्थिक परंपरा में देख लेते हैं। हम उस अर्थनीति को, उस समाज नीति को, उस संस्कृति को या उस राजनीति को देखने की कोशिश ही नहीं कर सकते हैं, या करते ही नहीं है, जो पैरेलल एक तरह की बात कर रही थी, जिसकी मूल अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। सुधीर चंद्र आते हैं, इतिहास लिखते हैं और वो बताते हैं कि गोदान में क्या कहा गया और आधे अधूरे में क्या कहा गया, वो साहित्य में जाके साहित्यिक को रूप में प्रयोग करते हैं। तब हमको लगता है कि नहीं, साहित्य भी इतिहास के काम कर सकता है। लेकिन इतिहास और साहित्य का क्या संदर्भ होगा, इतिहास और दर्शन का क्या संदर्भ होगा, दर्शन, साहित्य, इतिहास तीनों को मिला के क्या काम होगा? क्या हम कभी इस तरह से सोचते आए हैं? नहीं, और सोचने की हमको जहमत भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पे अभी अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुनश्चर्या कार्यक्रम में मैंने एक विषय रखा, भारतीय चिंतन परंपरा और भक्ति साहित्य। अब ये विषय हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो अध्यापक हैं उनको बड़ा नागवार गुजर रहा है, किस दृष्टि से कि चिंतन परंपरा में जब बात करते हैं और उसके बाद भक्ति साहित्य की बात करते हैं तो उन्होंने हमारे 6 दर्शन जानने चाहिए। हमारे यहाँ जो भक्ति साहित्य में 4 परंपराएं रही, चैतन्य महाप्रभु की, निम्बार्काचार्य की, अद्वैतवाद की, वो नहीं, उनको जानना चाहिए। उसके अलावा उस समय का इतिहास क्या कह रहा था वो जानना चाहिए, तब वो जाके भक्ति साहित्य क्या कहता है ये जान पाएंगे। लेकिन क्या हमें फुर्सत है? हम तो आचार्य शुक्ल और आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहे गए बातों के माध्यम से पूरा भक्ति काल पढ़ लेना चाहते हैं। हम नहीं जानना चाहते हैं कि उस समय या वेदांत है क्या, वेदांत का भक्ति पे प्रभाव क्या पड़ा, नाथ परंपरा क्या था, नाथ परंपरा का भक्ति साहित्य से क्या संबंध है, आदिकाल से पहले क्या संबंध था, साध्या शैली क्या थी, लटवासी क्यों बन गई कबीर के यहाँ, ये सब पे हम बात करना ही नहीं चाहते। हम रिसर्च ही नहीं करना चाहते। जो लिखा लिखाया पका पकाया सामग्री को कोट करो, आगे बढ़ो। उत्तर भारत की संत परंपरा पे जब परशुराम जी काम करते हैं तो दक्षिण भारत की संत परंपरा हमको पता ही नहीं है। एक किताब ये मानते हैं कि दक्षिण में भक्ति उत्पन्न हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत में संत परंपरा क्या रही थी नहीं देखते हैं। इसके अलावा ईस्ट या वेस्ट का क्या संदर्भ रहा, ईस्ट या वेस्ट में भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। पूर्वोत्तर भारत जिसको बोलते हैं आज के शब्दावली में, और पश्चिम का भारत जिसको गुजरात और मगर हम राजस्थान छोड़ भी दे, गुजरात के आसपास राजस्थान को लेके हम देखते हैं कि उस समय क्या क्या। अच्छा, एक दिन मैंने ऐसे सवाल पूछा था, आप सबसे भी, ये शोधार्थी लोग इस पे सोचेंगे, क्या अनायास है कि शंकराचार्य के जो मठ रहे हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत के सबसे जाके एक कोने कोने में क्यों बने हैं? इन चारों के बीच में क्या संबंध रहा होगा? क्यों शंकराचार्य 4 जगह जाके, एक जगह कश्मीर बैठते, जगह पूर्वांचल में बैठते हैं, पूर्वोत्तर में क्यों? कुछ तो बात रही होगी। उस चिंतन परंपरा का आधार क्या रहा होगा?
पश्चिम से लेकर पूर्व तक के भारतीय चिंतन परंपरा क्या रही, जिसके माध्यम से पूरे उत्तर भारत में भक्ति का मूवमेंट चलता है, या आज के साथ आधुनिक संदर्भ में भी ये बात कह सकते हैं। इस तरह से मैं बात करते हुए जब बोलता हूं कि हमारे यहाँ जो चिंतन परंपरा रही है, जिसके बारे में लोग बात करते रहे हैं, मैंने आपको मल्लिनाथ का संदर्भ देते हुए बताया, तब मैंने जब कहा कि बिना मूल के हमको नहीं कहना, ये हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है, लोक शास्त्र भी कहता है, और हमारे जो भारतीय चिंतन परंपरा के विद्वान रहे वो कहते हैं। और ये भी बोलते हैं नानपेक्षित मुच्छते, जो अपेक्षा ना हो उससे भी नहीं कहना मैंने जाना चाहिए। ऐसा भी काम मत कीजिए। तुलसीदास पे लिखा है ना, जो है किताब का नाम मुझे भी याद आ जाएगा, जिसमें तुलसीदास को पथभ्रष्ट साबित किया गया है, किताब आया। वो किताब कहाँ गई, कैसे गई, लोग नहीं जानते हैं। लेकिन गीता क्या कहता था, रामचरितमानस क्या कहता था, राम कथा की परंपरा क्या है, ये हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। 300 रामायण का काम आता है, कोई पश्चात में बैठा हुआ काम करता है कि भारत में रामायण की 300 परंपराएं रही हैं, और ये 300 परंपराएं जाके मलेशिया में कैसे बदलता है, इंडोनेशिया में राम कथा की क्या, ट्रिनिडाद टोबैगो में क्या परंपरा रहा है, और इन देशों से हमारा संबंध क्या रहा है, और ये राम कथा है क्या, इस राम कथा क्यों कहा जा रहा है। क्या जो हम रोज जो है शाम को राम कथा का प्रवचन सुनते हैं, केवल वही राम कथा है, या राम कथा बनने के पीछे कोई सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि भी रही है, और उन दृष्टियों ने समाज की निर्मित करने में, समाज को बनाने में, सभ्यता के विकास में क्या रूप बनाया, हम तो के बजाय ये विषय ही हमारे पास ज्ञान में नहीं है। पहली बात तो ये विषय पे मैंने बताया कि दो तरह की बात होती है कि रिसर्च की जो प्रविधि है, लिटरेचर में प्रविधियों का पालन नहीं किया जाता है बनस्पत की, जैसे कि अन्य विधाओं में, चाहे समाजशास्त्र हो या साइंस की विधाएं। तो प्रविधियां क्या रही हैं, उन प्रविधियों को लेकर काम क्यों नहीं करते हैं। अगर मैं रिसर्च में किसी को बोलते हैं कि शिकागो पैटर्न क्या है, एमएलए पैटर्न क्या है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पाद टिप्पणी क्या होती है, फुटनोट क्या होता है, तो हम लोग, या इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा का मायने क्या है, इस सब विशेष तौर पे हिंदी लिटरेचर या पर्शियन, अरबिक, जिनसे मेरा राफ्ता रोज होता है, ये लोग को इससे मतलब ही नहीं होता है। एक परंपरा रही है, कोट अनकोट करते हुए लिख देते हैं। अगर टूरिज्म नहीं आया होता और इनका सॉफ्टवेयर हिंदी लिटरेचर या दुनिया भर के साहित्य में उपलब्ध नहीं होता, तो हम कोट अनकोट की परंपरा में चलते रहते, हम अपनी बात कहने की जरूरत ही, जहमत ही नहीं उठाते। तो ये शोध मेथोडोलॉजी जो है उसका भी प्रयोग नहीं हो रहा है। विषय के चुनाव में हम नए विषय की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारे तरफ अभी तुरंत जो है नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति ने अनुवाद की तरफ से बहुत सारा ध्यान दिया है, अंतर विषय विषयों की बहुत सारी बात की है, मातृभाषा की बात की है, लोक की बात की है, और कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ काम करने की जो कार्यशैली, कारपेंटर का क्या कार्य था, क्यों ऐसा हुआ, धर्म जात की बात कर रहा है, संस्कृतियों की बात कर रहा है। इस तरह से कह सकते हो अंत अनुसंधात्मक जो प्रविधि है उसका प्रयोग विश्व साहित्य के साथ भारतीय चिंतन परंपरा का, हम विश्व गुरु की बात अगर एजेंडा के रूप में हम बात करें, केवल हम बोलते हैं कि हम विश्व गुरु थे। हम विश्व गुरु किस रूप में थे? क्या जिस तरह के यूएस की पैटर्न है कि वो पूंजीवादी प्रवृत्ति से विकसित करते हुए ज्ञान के विश्व गुरु बनना चाहते हैं हम, या ताकत का? दोनों में किसके गुरु थे? तब हम देखते हैं कि हम भारत जो है विश्व गुरु ज्ञान के रूप में रहा है। ज्ञान की परंपरा कहाँ चली गई? शिकागो भाषण विवेकानंद तक कहाँ चला गया? उस तरह का हम क्या काम कर रहे हैं? या कह सकते हैं साहित्यिकता बनाम राष्ट्रीयता की जो धारणा हमारे यहाँ है वो कहाँ है? उस पर काम हम क्यों नहीं करते हैं? प्रवासी लिटरेचर दुनिया भर का, जैसे मैंने बोला कि हम 8 देशों से राम कथा के माध्यम से मैंने बताया, मूल साहित्यकार वो हमारे चिंतन परंपरा में मर जाने के बाद ही हम उनको उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जीवित में उन पर बहुत फोकस नहीं करते हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति से, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दर्शन, इन सब के साथ अंत विषय के अनुसंधान की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह के किसी भी विषय को लेके जब तक हम एक नए तरीके की बातचीत करना नहीं शुरू करेंगे, साहित्य में विशेष तौर पे मानविकी के संदर्भों में हम नए काम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक बात, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझे समय
12-5 तक ही दिया गया है, 4 हो गया है, 2-3 और छोटी छोटी टिप्पणी कि मान लीजिए कि पाठालोचन क्या है हमारे पास, हम पाठालोचन कर, भाष्य की परंपरा हमारे पास थी, कहाँ चली गई? टेक्स्ट पे आधारित। आज के संदर्भ में अगर मैं आपको बोलूं कि आप श्रीमद् भगवत पुराण, यहाँ गीता, तुलसीदास रामचरितमानस, जायसी की पद्मावत, इसको पढ़ना है, या और भी थोड़ा सा और पीछे जाऊं, विद्यापति, पढ़ने के लिए हमारे पास उस भाषा के ज्ञान नहीं रह गया, और उस पर मतलब जिसको बोलता हूँ ना कि पाठालोचन के लिए हमारे पास सामग्री उपलब्ध नहीं है, या कह सकते हो कि जो हमने अभी बोला कि भाष्य उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रह गया उसका भाष्य कर सके। हमको मान लीजिए कि एक शब्द देता हूं, आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है कामायनी को। कामायनी में एक आता है कि त्रिपुर शब्द आता है, एक आता है भूमा। ये सारे शब्द, भूमा क्या है, त्रिपुर क्या है, भूमा का मधुमेदान, ये हम बोलते हैं कि प्रतिभिज्ञान, शैव दर्शन में प्रतिभिज्ञा क्या है, शक्ति क्या है, ये टर्म ही हम नहीं जानते हैं, और इसका भाष्य करने की बात करें, इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम करेंगे कैसे? इसलिए पाठालोचन की भी एक जो प्रक्रिया हमारे यहाँ आ रही है वो भी बंद हो गया है, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने बोला कि पांडुलिपि हमारे पास उपलब्ध है, राजस्थान में दुनिया भर की पांडुलिपि उपलब्ध है। मैंने अवध से उदाहरण दिया, मीरा के संदर्भ में, चित्तौड़ के बारे में। और इसके साथ ये भी होगा कि क्या कारण रहा है कि जैसे आज हम भील का चित्तौड़गढ़ से क्या संबंध रहा है, राणा प्रताप का उस समय के तमाम जनजातियों से किस तरह के संवाद रहे हैं, किस तरह से वो स्वाधीनता आंदोलन में काम किए हैं। आज जल जंगल जमीन के माध्यम से हम दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श को एक खेमे में लेके जाते जा रहे हैं, मूल विषय से काटते जा रहे हैं, क्या ऐसा कभी रहा है? इन सबको लेके रिसर्च करने की जरूरत है। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं आज विशेष तौर पे साहित्य के नए दिशा में आने वाले विषयों को लेकर, उनको चुनौतियों को लेकर बातचीत किया। कभी जब आएगा जब तो हम सैद्धांतिकी पे भी बात करेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे प्रयोग किया जाता है साहित्य में। इसके साथ ही अपने समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। कभी जरूर आप लोगों के साथ में रिसर्च में अब जो नए मेथोडोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और जो विज्ञान के साथ तारतम्य बिठा रहे हैं, जिस तरह से आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक फोरम पे हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से हम पाठ्य टिप्पणी सबका प्रयोग करें, उस पर भी बातचीत करूंगा। आज यही विराम देता हूं। आपने हमको बुलाया, आपने हमको सुना, आप सबको उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। Thank you, sir. Hope the students have gained a positive directives in the research, and really you have enlightened the challenges and the opportunities in the research subject to Indian literature and languages. So now we are proceeding to the second invited speaker. So I'm pleased to read the achievements and accomplishments of Dr. Nira Singh. Dr. Nira Singh is presently working as a Deputy Librarian at Punjab University, Chandigarh. He has been awarded the prestigious Commonwealth Professional Fellowship at University of East London, UK. He has completed several international courses on ICT. He has designed and developed the chemistry portal, for which he has received the prestigious Best Service Award presented by Vice Chancellor, Punjab University. He is a very sound academician. He has more than 40 research papers in international and national peer-reviewed journals and conferences, seminars. He has authored several books. He has been member of the editorial board of prestigious peer-reviewed journals, associated as a reviewer in various national and international journals in the field of LIS. So now I would like to invite Dr. Nira Singh to please start with his talk. Over to you, Niraj sir. Thank you, Dr. Sweta. Hope I am audible to all of you. Yes, sir. Yeah. So, respected Honorable Vice Chancellor, Professor Vinay Kumar Pathak ji, Director Research and Development Cell, Dr. Sweta Pandey, and other organizing committee members of this orientation program. First, my thanks to all of you for inviting me and giving me this opportunity to deliver talk on a very serious topic that is called plagiarism. So what is happening for a student during their research is now lots of information is available in the online format. Thousands of articles, books, and other reading materials are available on the internet. So it is very easy for the research scholars and the postgraduate student that while doing their research, they can easily do the copy and paste. And this is why the higher educational institutions, they are facing a very serious sort of challenge that is called research misconduct.
And that is why higher educational institution now taking research misconduct as very serious note. And that is why UGC in its 2018 regulation, they have notified this plagiarism as one of the serious offense. And there is a separate regulation for this. So that is why this topic is very, very important for all the research scholar. And with this opening remarks, now I'm going to share my screen with all of you so that we can talk about the concept of plagiarism, what are the different types of plagiarism, how we can avoid the plagiarism, and I will also discuss with you the key highlights of UGC 2018 regulation. And in universities now, almost all the universities in India and abroad, they are using two software. One is Turnitin and the second is Utkund, which is being provided free of cost by the IncludeNet Center to all the higher educational institutions. So it is also very, very important for the supervisor and the research scholar to know about how these software basically work and how they can upload the document, how they can analyze the report while checking the plagiarism. So now I'm sharing my screen, and if you can just give me a confirmation so that I can start the presentation. Dr. Shweta, I hope it is. Yes, sir. It's visible. It's visible. Okay. So the topic is importance of plagiarism in performing authentic research, and this is a brief outline of my presentation. I will discuss in brief what is plagiarism, what are the different ways through which we can avoid plagiarism. Some of the key highlights of UGC 2018 regulation for plagiarism, which is known as promotion of academic integrity and prevention of plagiarism higher educational institution. Once it is notified by the UGC, almost all the higher educational institution in India, they have adopted this regulation. And now whenever it comes to submission of your PhD thesis, it should be in accordance with this 2018 regulation. So it is very, very important for the supervisor and the research scholar to know what are the key objectives of this 2018 regulation and what are the things which you can comply while checking any anti-plagiarism software as far as research and script are concerned. And I will also give you a quick overview of Utkund and Turnitin anti-plagiarism software so that you have a clear understanding about how you can use this software and how you can analyze the report by submitting your document into these softwares. Now, research misconduct is having three parts. First is called fabrication, falsification, and plagiarism. And its short research misconduct is also known as FFP. So what is fabrication? When you are reporting observations that were never made. And what is falsification? When you are doing manipulation with the research data. And that is why if you see some of the journals, they have started the practice that as soon as you submit your paper for the publication, they also want the research scholar to upload their research data along with the manuscript so that they can validate the findings, they can validate the results, which research scholar they have reported while writing their research paper. And the third form is called plagiarism. And what is plagiarism? Plagiarism is a simple mean, it's a practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own without crediting the source. So this is the definition which I have borrowed from the Merriam-Webster Online Dictionary. In simple mean, if you are borrowing any text, any idea, any images, any data, or any sort of content, which is already published by someone else, so you have to acknowledge the author, you have to give the credit to the original source. And if you have failed to do this thing, this is called a plagiarism. And there are different types of plagiarism, and it is very, very important for the research scholar to understand each and every type of plagiarism so that they can avoid the plagiarism while writing their PhD thesis or writing their research paper. What is global plagiarism? When you are completely copying the things which is written by someone else. So before the concept of anti-plagiarism software, before the concept of Shodh Ganga, what was happening in some Indian universities? Suppose there is one PhD thesis submitted in Punjab University. So someone else has entirely copied the research work while just making the changes in the title, and he or she has submitted the same work in some other university. Because at that time there was no anti-plagiarism software, there was no Shodh Ganga. So it was very, very difficult to identify the duplicacy of research. So if you are involving yourself in such type of activity, that is called global plagiarism.
and it is considered as one of the serious form of plagiarism. Now, the second type is called paraphrasing plagiarism. What is paraphrasing? Paraphrasing means when you are writing something in your own word. Now, for any research scholar, it is very, very impossible to write the entire research manuscript in his or her own words, specifically when it comes to writing the introduction or literature review part. That is why while writing the introduction and literature review, we are taking the help of already published material. But even if you are writing the thing in your own way, in that case also you have to give acknowledgement to the original source from where you have borrowed the idea or for which you have done the paraphrasing. So that is why it is very, very important that whenever you are doing paraphrasing, you always give in-text citation to the original source. Now, next is called verbatim plagiarism, where you are directly copying a passage of text without citation. You know, sometimes there is a perception amongst the research scholar that even if we are giving the citation to the original source and if we are copying the small sentences or a small paragraph, there is a no harm. But it is not correct. That is why it is called a verbatim plagiarism. So you should be very, very careful if you are directly taking some content which is published by some other research scholar. Even if you are giving this references to such type of sentences and paragraph, that is also called verbatim plagiarism. Next is mosaic plagiarism. Now, suppose you have copied or borrowed the idea or text from multiple sources, and you have given the list of references of 80 or 90 articles. But if you have failed to put your own voice, that is called mosaic plagiarism. So that is why for writing the introduction or for writing the literature review, you can take the help of already published material. But while writing your PhD thesis, while writing your research manuscript, if you have completely borrowed the things or the sentences or the data from already published material and you have failed to put your own voice, that is called mosaic plagiarism. Now, self-plagiarism, again, UGC is very, very serious on self-plagiarism, and that is why last year also they have issued a notification to all the university where the UGC has directed the vice chancellor or the higher authorities of the university that while promoting any faculty member or while awarding the PhD thesis to any research scholar, the committee must check the case of self-plagiarism. What is self-plagiarism? Suppose while writing your PhD thesis, you have published one research paper in some other journal. So once you publish your research paper with any journal, then it becomes a copyright material of that particular publisher. So in future, if you will write your another paper and you will copy the introduction or other type of content from your own previously published material, and you are not giving the credit to your own paper, that is called self-plagiarism. So the meaning of self-plagiarism is even if the introduction or the literature review or the methodology or the data which you have published in the form of research paper, and now you are in the process of writing your another paper, in that case also you have to give citation to your previously published paper, otherwise it will be considered as an act of self-plagiarism. Now, incorrect citation, there are many studies where it has been confirmed that one of the main reasons behind plagiarism is students, they don't know how to cite right. And that is why there is a concept of citation style where you have to give the complete bibliographical information of all those sources which you have consulted in a proper order or in a proper sentence. That is why we are having different type of citation style, whether it is APA, Chicago, manual. And the purpose of all these citation style is whenever you are giving references, it should be in particular order. But if you are not giving the complete bibliographical information and you are not following any citation style, that is called incorrect citation. And this is also one of the type of plagiarism. Now, another type is called replication. Now, again, there is a lack of awareness among the research scholars whenever they are submitting their research paper to any single journal. So what they are doing at the same time, they are submitting their research paper to 2 or 3 journals. So if you are submitting your research paper to 2 or 3 different journals at the same time, that is called replication.
So that is why you should be very, very careful that unless you are not receiving acceptance or rejection from the editor of the first journal where you have submitted your paper, do not try to publish your research paper with any other publisher. Otherwise, it is considered as a more serious form of research ethics. Another type is called misleading attribution. Now, sometime if you are not giving the correct names of the author while writing your research paper, correct name of author means, now if someone has requested me that you are writing your research paper, you please include my name also in your research paper. Now that is why some very reputed publishers, they have started a practice where they are also want to know from the corresponding author what are the contribution of all the authors of this research paper. So you should be very, very careful while giving names of the author. And last one is called unethical collaboration. Now, suppose if you are working in some collaborative project where funding agencies has given the fund to conduct the research, and while writing your research, if you are not acknowledging your team members, the funding agencies who has sponsored your project, that is called unethical collaborations, right? So these are the different type of plagiarism, and you should be very, very careful while writing your PhD thesis or research manuscript, while to avoid the plagiarism. Now, citation is very, very important concept when we talk about the plagiarism. So what is citation? It is basically a way of giving credit to someone else's thought, idea, research. And why we are giving citation while writing our research paper? Because while giving the citation, you are telling the reader of your research paper, this portion of the work you have borrowed from some other sources, and you will be appreciated more if your ideas people will find better than those of the original source. So generally, while writing your PhD thesis or research manuscript, we do the literature survey, or we write the literature review part. Why we are writing the literature review part? Because there are many reasons. And one of the reasons is we wanted to tell our reader how our research is different from the existing reader. So if you are citing more number of research paper, and if the reader of your paper, sometimes they are more interested in reading the original research paper rather than your research paper. So if you are giving a proper citation, proper references, the reader of your research paper will directly go to the source and they can compare your research with the existing research. So that is why giving citation is very, very important part while writing your research manuscript. And for giving the citations, as I just discussed with all of you, there are many citation style, and these are basically a set of rules on how to cite sources in academic writing. So generally, university and higher educational institutions, they are following APA, MLA, or Chicago, but there are more than 600 citation styles are available. So that is why if any research scholar, they have developed a practice of using any reference management software, whether it is Mendeley, EndNote, or Zotero. And if you are arranging the references using these reference management software, so these are very, very sophisticated and AI-based softwares which definitely help you in terms of arranging all your references according to any citation style. Now, when we discuss about the citation style, again in the citation style, there are two types. First is called in-text citation, and second is called references. What is references? The portion or the part of your research paper or PhD thesis where you give complete bibliographical information of all those research paper which you have consulted while writing your research paper or PhD thesis. That is called references. What is in-text citation? In-text citation means whenever you are paraphrasing, whenever you are quoting, whenever you are summarizing, you have to give the in-text citation at the end of that particular paragraph. And again, there are two types of in-text citation, that is called narrative and parenthetic. So in narrative in-text citation, you start the paragraph while giving the acknowledgement to the author and the year on which the author has published the paper. And at the end of the paragraph, you also write down the page number. But in case of parenthetical citation style, at the end of the paragraph, you write the name of the authors, comma, year of publication, then the page number.
So you should be very, very careful if you are borrowing something as it is. Now, suppose if you want to introduce the topic of your research with the help of some standard sources, and you wanted to borrow a standard definition of that particular term or the concept, in that case, always write the definition within the quotes. So whenever you are writing something within the quotes, that means this portion of your work is not yours, and this you have borrowed from this particular source. And whenever you are using Turnitin or Urkund, both the software has a provision where you can exclude all the quoted material while checking the similarity of your research manuscript. So it is very, very important. Now, the question you can ask for me is, do you require to cite each and everything which you are writing in your research paper or research manuscript? The answer is no, because there is a concept of common knowledge. What is common knowledge? If something has become a public fact, if something which you are writing in your research manuscript, you can find in multiple sources. Like for example, if I'm writing that Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, or if I'm writing that Narendra Modi is the Prime Minister of India. So for this, there is no need to give any sort of references or in-text citation, because it has now become a public fact, and such type of information you can find in multiple sources. So whenever you are feeling that this portion of your work comes under the concept of common knowledge, in that case, there is no need to give citation. But you should be very, very careful that whatever content or sentences or paragraph which you think is a part of common knowledge, whether it actually belongs to this particular category or not. Now, paraphrasing, it is very, very important for the research scholar, as I discussed earlier, that for any research scholar, even for any faculty member, it is nearly impossible to write entire research manuscript in his or her own word. That is why there is a concept of paraphrasing. And what is paraphrasing? Paraphrasing means putting the original passage of text in your own words without changing its meaning. So this is the example of how you can do the paraphrasing. The first paragraph is the original one, and the second one is the paraphrased portion of the original paragraph. So while doing paraphrasing, what you can do is you can read the original paragraph and you can rewrite in your own words. But there are certain things which you should remember, or which you should be very, very careful while doing paraphrasing is, you always give the in-text citation whenever you are doing paraphrasing, and you always try to retain very few words from the original paragraph. And third and most important thing is, whenever you are doing the paraphrasing, you should be very, very careful that it is not changing the meaning of the original paragraph. And for the research scholar, there are many good paraphrasing tools are available, like Quillboard, paraphrasingtool.com, spinboard.com. These all are free paraphrasing tools which you can use while doing the paraphrasing of original article. I'm not saying that all these tools are 100% reliable, 100% authentic, but anyway, they are a very helping tool for the research scholar, which can give you a paraphrased version of any original article or any original paragraph. But even after using this tool, you should read the paraphrased version twice and thrice so that you can check that there is no grammatical mistake and the tool has not changed the meaning of the original paragraph. Now, what are the various ways through which you can prevent the plagiarism? The golden rule to avoid plagiarism is cite as much as you can do. Means whatever sources you have consulted, whatever sources you have referred, you always give credit to all such sources. And while paraphrasing, you make sure that you rewording the original paragraph without alerting the meaning of the idea, and try to avoid using too many similar words or phrases from the source. You always insert a source into while writing whenever you are using quotation. And as per the copyright law, there is a condition that whenever you are quoting that particular paragraph, it should not exceed the 40 words limitation. So suppose if you are quoting something as it is, and if it is below 40 words, then in that case you can use that particular sentence within the quotes. But if it is exceeding more than 40 words,
then you can't use that particular paragraph within the course. That is very, very important, right? And provide references not only for the text or idea or for the data, but even for photographs, diagrams, picture also. And for this, there is very, very important concept is called Creative Commons licenses. Now, all the open access content, whether it comes to books, journals, conference paper, whatever content is available in online format, you should always find that that particular article or the paper or any other type of research material, the content and images, they are protected under Creative Commons licenses, and it is called CC licenses. So this is the example of one of the Elsevier article, which is published in the Science Direct. And here you can see that all the data, content, and images, they are protected under CC BY license. So whenever you are using any online content, you should be very, very careful, specifically while using images. Now, there are many instances where the research scholar from sciences, if you are using the images in your research paper, and when you submit your research paper for the publication in any journal, the editor will definitely ask you a question, from where you have borrowed these images, and have you taken the permission from the author to use these images in your research paper? So if you are borrowing the images from the online published material, in that case, you should have a clear-cut understanding about the Creative Commons licenses. I don't have much time, that is why I'm not going to explain you in detail. But one of the most common category which you will find for all the academic content is called CC BY. So if any content is protected under CC BY, that means you can use that particular content or images for your academic purpose, but the condition is you have to give citation to the original source. And there are many categories, so whenever you have free time, you always read about this Creative Commons licenses. Now, MHRD has taken various initiatives as far as preventing plagiarism is concerned, and one of its initiative is this regulation which was notified in 23rd July 2018, where the main objective is to create awareness amongst the research scholar about research ethics, research misconduct, plagiarism, literature review, reference management software. And the second and third objective is where UGC has directed all the higher educational institutions to develop a mechanism so that whenever it comes to submission of PhD thesis, the university must check the research thesis while using any anti-plagiarism software. Right now, it is a mandatory for all the research scholars, even for all the universities. So in this regulations, these are the content. So whenever you are writing research paper, thesis, chapter in books, full-fledged book, dissertation or articles, you have to check the plagiarism. And while checking the plagiarism, these are the exclusions which you can always apply. And for young research scholar, as per this notification, UGC has clearly mentioned that any PhD thesis is having two components. One is called core element and the second is called non-core element. So while submitting the final draft of your PhD thesis, as per this UGC 2018 regulation, you can exclude the preliminary pages like list of tables, list of figures, abbreviation, table of content, references, before checking the plagiarism of your final draft of PhD thesis. So generally the research scholar, what they are doing, they are submitting the exact replica of the printed version of their PhD thesis. And whenever you will upload the completely, entirely PhD thesis into any software, definitely it will increase the similarity level because it will show similarity from the references, it will show similarity with the abbreviation, even the table of content and other preliminary pages. So first and important thing is whenever you are submitting the final draft of your PhD thesis, you start with the title page and directly you can include the chapter 1 up to the final chapter. Remaining thing you can exclude. And this is not I am saying, it is as per the UGC 2018 regulation. You can exclude all the quoted material while checking the similarity of your PhD thesis. You can exclude all references, bibliography, table of content. And even if you are using, if you are quoting some standard laws, if you have used standard symbols, standard equations, that also you can exclude.
And as per this notification, the research scholar or the supervisor, they can exclude the small matches up to 14 words. You know, sometime if I'm writing that the Punjab University was established in the year 1882, so it will pick Punjab University 1882. Sometime it will pick your name, your institution name. So just to avoid this thing, the UGC has given you a filter where while checking through Turnitin, you can apply. There is a one exclusion that is called small matches, and you can put 14 words. So up to 14 words, it will exclude all the similarity because these are called the small matches, and that is why UGC has given you this type of filters. Now, as per this notification, UGC has categorized different level of plagiarism, which is called level 0, level 1, level 2, and level 3. So as per this notification, any PhD thesis which is having less than 10% similarity, there is a no penalty. But if it is fall under the category of 10 to 14, 40 to 60, and 60 above, there is a penalty, and it is for both, for the supervisor as for the research scholar. But again, UGC has given this freedom or autonomy to the higher educational institution that whenever it is a case of plagiarism where the case is fall under the category of level 1, level 2, or level 3, it is up to the institution academic integrity panel which type of penalty they wanted to impose on the faculty member or the research scholar. So you should be very, very careful while submitting the final draft of your PhD thesis, and you always try to reduce it below 10%, right? Now, this is about the notification which UGC had issued to all the universities on 20th April 2020, and it is basically about the self-plagiarism. So I have given you a little bit overview about the self-plagiarism. So you should be very, very careful while using your own previously published work while writing your PhD thesis or publishing your another work. Now, even after notifying this regulation, UGC has identified that there are many state universities, there are many new central university due to the budget crisis, they are not able to afford any anti-plagiarism software. And for this, UGC has invited a global tender for all those firms who are dealing with this anti-plagiarism software. And UGC, under its So Sudhi initiative, they have given access to the Urkund software, which they have selected after following the global tendering process. And as soon as they have selected this Urkund software, the notification has been issued to all the university that the UGC is providing free access to the Urkund software. And now more than 1,000 institutions across the India, they are using this software. And I'm very much sure that your university must be using this Urkund software. Now, talking about Urkund or anti-plagiarism, it is also very important for the supervisor and for the research scholar to know how this software basically works. So whether we talk about the Turnitin or Urkund, they are having three types of repository. First is called internet, second is called published material, and third is called student material. So if you are copying anything which is available on internet, so as soon as you will upload your research manuscript, immediately it will show the similarity. Now, all these software companies, they are having tie-up with all the major publishers. So as soon as any publisher is publishing any article, they are giving one copy to these companies. So if you are copying anything from already published material, in that case also it will show the similarity with the research paper. And third is called student material. Now, as per the policy of Urkund, whatever you are submitting, it is becoming a part of their repository. So if you will copy anything from the student material, immediately it will show the similarity from this particular database. So Urkund or Turnitin, it's very easy software. It is very easy to use software, and Turnitin is considered as a well-known software for checking the similarity of research manuscript, and majority of publisher and higher educational institutions across the world, they are using the Turnitin. So if your institution is having access to Turnitin, then always you can use this software whenever it comes to checking the similarity of your PhD thesis or publishing your research paper. So these are some simple instructions which you can follow while checking the similarity. And there are some free tools are also available. If
you want to use some free tools, these are the list of free anti-plagiarism tools which are free to use for the research scholar. But one of the problem while using these open access plagiarism tool is whatever document you are uploading, it is becoming part of their repository. So suppose before submitting my PhD thesis, if I have used any of the free tools, and when you will check the final version of your PhD thesis, there might be a possibility that it will show 100% of similarity with your already submitted material, which you have used with this open access plagiarism tool, right? There are some good tools are available like copy leaks. So here there is a provision where you can remove your content from their repository. So these are some of the screenshot of using this software. And if you wanted to know about the cases of misconduct in India, there are many instances where the vice chancellor or even the HRD minister of some state, they have to resign from their post because they indulge themselves in the act of plagiarism. So there is one society, it is called Society for Scientific Values. They are investigating the cases of research misconduct across higher educational institutions in India. And if you wanted to know more about such type of cases, you can visit their website where all such type of cases and the brief description is given there, right? So I don't know how much time still I'm having so that I can give a live demo or I can bind up my session. Dr. Shweta? We are running short of time. Okay, so just to conclude my presentation now, this plagiarism is taken very, very serious in the and it is considered a serious academic offense, and it has a serious personal and professional consequences. So that is why the purpose of this orientation program is to make all the research scholar and the supervisor aware about the concept of research ethics and the plagiarism, so that when it comes to writing PhD thesis or writing the research manuscript, they can avoid this a serious offense that is called plagiarism. So thank you very much for listening to me. And if you have any query or if you wanted to ask me any question, then you can ask. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing important key aspects and insights on plagiarism. That is really indeed it's very useful for researchers. And I'm sure many of us have more now clarity on the plagiarism. So now we have reached to the end of the orientation program, and it will be incomplete without proposing a vote of thanks. May I now request our colleague, Dr. Mohit Ahuja, Assistant Dean, Research R&D Cell, to please propose a vote of thanks. Good afternoon, everyone. I, on behalf of Chhatrapati Shahuji Maharaj University, take this opportunity to thank Honorable Vice Chancellor Professor Vinay Kumar Pathak sir, Honorable Pro Vice Chancellor Professor Sudhir Kumar Avasthi sir for gracing the occasion. Your graceful presence has been a source of inspiration for us and has made the event more special. Professor Rosa Dhawan sir, honorary guest for the event, who provided his intellectual inputs on increasing the role of collaboration and communication for pursuits of better research. Professor Sandeep Verma sir, chief guest for this event, for his excellent articulation of the nitty-gritties of a PhD journey. Professor Sudhir sir, for sharing his experiences in the sphere of languages. Dr. Nira Singh sir, for providing a much-needed deliberation on plagiarism. Dr. Vasha Gupta ma'am, Dean R&D, for playing a pivotal role in carrying the research baton forward. R&D team, journalism and admin team, and to all the faculties, conveners, and students who have joined us online. I truly believe that the sky is the limit for all your future endeavors, and all you need is the belief and sparkle in your eyes, ready to take on the world full of endless possibilities. Thank you, everyone. Over to you, ma'am. Now we are closing up with the orientation program. So unfortunately, just there is an announcement. Unfortunately, one more speaker is not with us. So we are proceeding toward closing of this session. I wish good luck to all of you for your PhD program. In due course of time, you will be receiving communication regarding the coursework schedule. I request all of you to please stay updated with us and visit our website, CSJMU. I hope you all will get benefited with all the available resources by the university and do the effective utilization and do quality good research to bring laurels to the university. Thank you all. Stay safe and stay healthy.